किया है। उनसे हम ये भी जानेंगे कि नया HPV वैक्सीन जो इंडिया ने बनाया, जो इंडिजिनस है, वो कितना प्रभावी होगा और जो पहले से दुनिया भर में मौजूद है वैक्सीन, उससे किस तरह अलग होगा और कितना अलग होगा। क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में इस खबर के बाद उठते हैं। वो सवाल हम उनसे पूछेंगे। हमारा ये कार्यक्रम अगले 3 घंटे तक यानी 11 बजे तक YouTube और Facebook पर लाइव रहेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये राउंड अप वीडियो। नमस्कार, हेल्थ फॉर ऑल के 47वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस की। भारत सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत देश में टीबी के कंप्लीट इरेडिकेशन का एक लक्ष्य रखा था 2025 का, यानी 2025 तक भारत में टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य बनाया गया। इसी के तहत नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये लग नहीं रहा है कि इंडिया इस टारगेट को पूरा कर पाएगा। We start this first session with yoga. Very simple yogas. We can see yoga is the way of life. Today everybody talks about yoga. Just now we were seeing the clips. Mr. Modi has made this 21st June as International Yoga Day. After that, last 3-4 years, and of course, I will mention the name of Baba Ramdev. He has popularized this concept of yoga in our India, though it was there since ages in our country. But Mr. Ramdev Baba has popularized this yoga. Yoga is very important. Yoga is essence of life. Yoga is not only art, it's a science. It balances our body and mind. And in today's life, you will see social media or YouTube, lots of yoga poses, asanas are there on YouTube. You can practice all of those. But what I want to say, when we start watching YouTube channels for any particular yoga, like I'm not feeling well or I have heard from my friend that I should start yoga, we immediately open the YouTube and start watching some asanas. Okay, this is very good and I should start. यही पर मेरा रोल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। We all can find different asanas of yoga, different poses of yoga. In fact, you will see very difficult poses. But योगा क्या है? योगा से हम कैसे अपने को ट्रीट कर सकते हैं, अपने को हेल्दी रख सकते हैं, that is more important. और कुछ चीजें हैं योगा की बेसिक्स, उनको बिना जाने if we will start practicing yoga, हमें बेनिफिट के जगह हमारे बॉडी में इंजरी होगी। तो ये क्या कुछ चीजें हैं, उनको मैं आज आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि डिफिकल्ट पोजेस जो कि YouTube पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप सभी जानते हैं, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो शायद कहीं मिसिंग होती है स्टार्ट करने से पहले। तो योगा, और ऑब्वियसली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेली रूटीन। योगा शुड बी योर डेली रूटीन टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, योर बॉडी एंड माइंड, टू कीप द बैलेंस बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। तो सबसे पहले क्या करना है, योगा के पहले बहुत लोग मैंने देखा है प्रैक्टिस करते हुए कि वो दिन के किसी भी समय योगा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे हैं, मैंने 10 o'clock का योगा सेशन ज्वाइन किया, मैंने 4 o'clock का योगा सेशन ज्वाइन किया है।
लाइक लोग बात करते हैं, बट हमें योगा कब करना चाहिए? प्रेफरेबली योगा empty stomach करना चाहिए, preferably, and morning time is the best time. Then also, if you don't get time in the morning, you can practice yoga in evening also. But there should be minimum 1 to 2 hour gap between your meal and yoga practice. That is the first golden rule of practicing yoga. Second rule is keep yourself hydrated before practicing yoga. पर ऐसा नहीं है कि 2 ग्लास पानी पी लिया और योगा करना शुरू किया. Then if you are doing any asanas, you will feel pukish, vomiting आनी शुरू हो जाएगी and you will not be able to complete your asanas perfectly. So इसीलिए हाइड्रेटेड रखना है तो थोड़ी थोड़ी वाटर सिप करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है. थर्ड, ऑलवेज वेयर लूज एंड ब्रीदेबल क्लोथ. ऐसा नहीं है कि ढीले कपड़े पहने बट फैंसी कपड़े के चक्कर में ऐसा मटेरियल यूज किया जो कि कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपके बॉडी में जो एनर्जी जनरेट होती है वो आपके बॉडी से डिसिपेट नहीं हो पाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी. फोर्थ, ऑलवेज यूज mat for practicing yoga. Like I am sitting on a mat. You can see इसके 2 फायदे हैं. आपने देखा होगा पार्क में बहुत सारे लोग जाते हैं और वहीं पर ग्राउंड में बैठकर ग्रास पर बैठ करके they practice yoga. ऐसा नहीं है, योगा करना बहुत अच्छी बात है, बट देयर मस्ट बी सम आसना. जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है और डायरेक्टली वो आपके, अगर नीचे कोई मैट नहीं है तो वो अर्थ में चली जाएगी. You are practicing yoga to generate some vital energy in your body. तो अगर वो अर्थ में चली जाएगी तो that will not give you proper benefit. इसलिए always use mat for practicing yoga. उसके अलावा मैट शुड बी स्टिकी टू द ग्राउंड. आप देख रहे हैं जैसे ये मैट है, इस पर अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो ये स्लिप नहीं करेगा. मेनी टाइम्स वी यूज नॉर्मल बेडशीट. वैसे प्रैक्टिस करने में जब हम कोई आसन कर रहे हैं और खड़े होकर करते हैं तो वी में स्लिप और हमें इंजरी हो सकती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा जो एक अनदर गोल्डन रूल है, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है. द मोमेंट वी स्टॉप ब्रीदिंग, लाइफ इज ओवर, फिनिश. सांस रुक गई तो जीवन खत्म है. तो ब्रीदिंग कैसे करना है योगा में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. We now move on to the next session of your health counter. You spoke of these classical symptoms of the heart, sweating, perspiration, and pain, heaviness in the heart. So if suppose somebody has all these symptoms, classical symptoms of an oncoming cardiac event, what should people around him do before an ambulance arrives? Yes, we are making many of us have pioneered in educating people for CPR. CPR is cardiopulmonary resuscitation, which is easy to learn and easy to perform, provided we are interested in it and we are alert at the place. And sometimes we do not even need an ambulance or a well-equipped ambulance if the facility is not around. So it is the speed with which the patient is to be transferred to a higher center. I would say higher center because it could be from primary health center to district hospital, from district hospital to medical college around, or super specialty tertiary care hospital. So we have to upgrade the hospital of the patient by quickly transferring, and one should know how to perform a CPR. The CPR was a bit hesitantly learned earlier, but now the CPR is modified. So most important component is the thump or pressure on the chest in a sustained manner. The only thing, it should not be done on patient lying on a soft cot or a palang or charpai. It should be, we should shift the patient immediately to the floor or hard area. And then the bottom of the front of the chest, which we call as sternal region, here lies the heart. Everybody knows where the heart lies. Virtually we all know it is on the left side, but we have to give pressure in the center, and by keeping our hands like this, we have to sustain pressure applied for
one jerk, sustained jerk, and then release and then wait. So approximately 70 compressions or 60 compressions per minute. Ideal heart rate is 72. We know if we can do that, or sometimes a little faster, then the pumping of the heart can improve if the patient collapses or if a person collapses. And this should be interrupted after 50 to 60 such compressions, and then we can give a breathing, mouth-to-mouth breathing, but that's not very important to give mouth-to-mouth breathing. So we can again do this compression and keep the head backwards to keep the airway open. And this a very common drill one should know and learn. Such compressions are very important. And if a person is alone, sometimes we advise the patients to take, if you are having in a car, driving during car driving, one has a feeling or suddenly feeling of collapse or darkness around the eyes, and one has a fainting, then keep coughing. So if we cough, it stimulates the nerves and it tries to give a signal to the heart to beat again if there is a cardiac arrest. It also increases the pressure in the neck and might regulate the cardiac rhythm. So both ways in the slowing and fast variety of the cardiac arrhythmia, the forceful coughing also helps, and this should be done with the presence of mind, and one should not be around. Now the other side is that we have to keep the cardioverter defibrillators at the malls and at the various public places, which is a distant dream for India. In some countries this is already being done and practiced. We have drones also which can come and give a rescue under the instruction from the remote computer and remote medical center, and they can bring even a cardioverter defibrillator and at a particular spot, and one can manage through the audio directions from the remote centers. And this is being done, that's why I'm talking. So robotics and drones have come in a big way in medicine, and even in my Gangaram hospital at the various floors, I'm very happy to say that these defibrillators are installed, and most of the staff, like a lift staff and ward staff, including staff nurses of course, and the reception staff, they are trained for this drill. If something can happen like this, even in the hospital, they have to be on alert and perform it, and this could be life-saving. If we can save one life out of the cost of a defibrillator, the cost is recovered, because life is precious. The next 1 hour will be dedicated to the elimination of TB by 2025, current status, and the way forward. In every adversity lies an opportunity, and this pandemic has provided us with one to augment TB elimination efforts by strengthening our public health systems and infectious disease control action. Dedicated infectious disease hospitals that are being established as part of the pandemic preparedness or response will contribute significantly to TB care and management. But can we eliminate TB by 2025? That's the big question before us. कि गवर्नमेंट प्लान जो है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से 2025 तक टीबी का कंप्लीट इरेडिकेशन होना है इंडिया में। हम कहाँ खड़े हैं? लग रहा है आपको होगा? ये कहीं से भी नजर नहीं आता हुआ लगता है, क्योंकि पैंडेमिक में हम लोग जो है ऑलरेडी बहुत पीछे पुशअप हो गए हैं, पुश बैक हो गए रादर। जो पेशेंट्स की मेडिकेशन चलते थे रेगुलर, वो सब मेडिकेशन उन्होंने डिसकंटिन्यू किए। कई पेशेंट जो दिखाना चाहते थे क्लिनिक्स में जाके दिखा नहीं पाए, बीमारी और बढ़ी है और फैली है, और छोटे छोटे घरों में कमरों में रहने से जो है बीमारी बल्कि और लोगों में फैल गई, क्योंकि पहले सब लोग बाहर जाते थे, उतना एक दूसरे एक्सपोजर नहीं रहता था एक पेशेंट से। वहीं पे खांसना, वहीं पे 24 घंटे रहना एक ही कमरे के अंदर, तो एक मरीजों से ऐसी कई फैमिली हम लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसमें एक फैमिली के 3-3, 4-4 लोग बीमार हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी जो है
ये लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आता है। डॉक्टर साहब, हमें कोविड पेंडेमिक एक बहाना भी मिल गया है। कुछ नहीं हो पाता है, अगर इकोनॉमी में गिरावट है तो कोविड वजह है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कोविड है। मान लीजिए कोविड नहीं होता तो क्या हम 2025 के लक्ष्य को पूरा कर लेते? तो भी हम लोग लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ हद तक जो है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक डेडलाइन सेट करते हैं, हम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसमें और बेटर होता है हमारा प्रोग्राम, और हम लोग और ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इंक्रीज करते हैं, और ज़्यादा केस फाइंडिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों से जो है आप कोशिश करते हो कि हाँ केसेस आपके कम हो, लेकिन एलिमिनेट करना किस साल में पॉसिबल हो पाएगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बीमारी हमारे साथ सदियों से चली आ रही है, मतलब फ्रॉम सेंचुरीज टुगेदर, एंड वी डोंट सी एन एंड टू इट। Can you explain what exactly is DOTS and what's the problem with that? See, basically, DOTS was when it was initiated in 1997. See, RNTC, there was revised national TV program, and then DOTS came into picture. And previously, DOTS was like it is basically directly observed treatment, short course chemotherapy, right? So it was designed that every patient, because see, it is a human nature. It is a human nature that any person, कोई भी व्यक्ति है, अगर 5-6 दिन की दवाई लेता है और उसको थोड़ा अच्छा लगता है तो वो ये सोचता है कि अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है, या मैं दवा छोड़ दूं, या हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें वो पेन चला गया, या हम वेलबींग, हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि अब दवाई की जरूरत नहीं। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट हैज बीन फाउंड दैट टू डिफॉल्ट आफ्टर 2-3 months is a natural phenomenon. It is very natural for even doctors also, if we are taking some treatment and if we are feeling good, to complete the treatment. So point is that DOTS was introduced. DOTS क्यों लाया गया? क्योंकि DOTS की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हम पेशेंट को हमारी प्रेजेंस में, यानी हफ्ते में 3 दिन बुला के उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर दवाई खिला सके, इस कंसेप्ट से DOTS को लाया गया। क्या चूंकि आपको जब टीबी हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, तब आप दिल्ली में पढ़ते थे और उसके बाद आप बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो क्या दिल्ली मुंबई में भी आपको इस तरह का सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ा था? सोशल स्टिग्मा तब फेस करूंगा जब मैं बताऊंगा कि मुझे टीबी है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुरू में ही बोल दिया था कि ब्रोंकोनिमोनिया बताइएगा जब भी, जहां भी पूछेंगे। सो मैंने ब्रोंकोनिमोनिया बताया, तो किसी को कभी शक भी नहीं आया कि टीबी था। इवेंचुअली देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई यूज्ड टू बिलीव कि मुझे ब्रोंकोनिमोनिया है, मुझे टीबी नहीं है। इतने बार मैंने वो झूठ बोल दिया था। सो सोशल स्टिग्मा नहीं आया था, बट आई रिमेम्बर, क्योंकि मुझे तो ये सोशल स्टिग्मा के डर से ही आपको झूठ बोलना पड़ा। बिल्कुल। एंड मुझे तभी समझा नहीं कि मुझे झूठ क्यों बोलना है, बिकॉज टीबी ऐसा कोई मेरे फॉल्ट की वजह से तो नहीं हुआ था, ना ही मुझे ऐसा कोई बीमारी था जो कि अगर मैं ट्रीट नहीं कर रहा तो दूसरे को फैलेगा या दूसरा लोग डरना चाहिए। बट बिकॉज डॉक्टर्स एट द बेस्ट हॉस्पिटल्स, आई टोल्ड यू, अपोलो, हिंदुजा, लीलावती, नाउ आई कांट नेम एनी बेटर हॉस्पिटल्स देन दीज। अगर वो डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं कि मत बताओ, अगर बताना नहीं चाहते तो अब मुझे आई वाज एट लॉस ऑफ वर्ड्स और मैंने नहीं बताया। सोशल स्टिग्मा मे बी इन द फॉर्म ऑफ कि अगर मुझे कोई खांसी होता था और कोई जोक करता था, या या नाउ अब मुझे कुछ बोलना होता तो नाउ आई एम वोकल, बिकॉज काफी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग को टीबी होता है और इट्स इफ ट्रीटेड इट्स अ नॉर्मल डिजीज। सेलिब्रिटीज लोग को भी होता है, तो दैट आल्सो गिव मी एनकरेजमेंट। एंड वन ऑफ द रीजंस दैट कोई मेरे को पूछता है हेयर लॉस, तो मैं बोलता हूँ टीबी का साइड इफेक्ट हो सकता है, जोकिंगली। बट आई थिंक सोशल स्टिग्मा तब नहीं था बिकॉज मैंने बताया नहीं, और मुझे बताया, मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस किया था नहीं। अब नहीं होता अगर मुझे बताना होता तो किसी को।
Namaskar and welcome back. I'm Shankar Raj, the president of Heal Foundation and the host of the 48th episode of Health4All, along with my co-host Kishore Malviya. This show is live on Facebook and YouTube. We kickstart this particular episode with yoga on PCOS. To explain and demonstrate the asanas, we have with us Dr. Pooja Pandey, a certified yoga teacher and an expert in aerobics and Zumba, and runs Ayurveda Physiotherapy, combining all these three techniques for better living. She's also the creative spirit behind her successful YouTube channel called Ayurveda Physio Tips. Welcome, Dr. Pooja. How did the floods in Bangalore treat you? It was not bad here, and plus I work very near. I make sure that I don't have to travel much in Bangalore. So for me, it was good. So you didn't use any boat or anything to reach your office? No. But it was a very pathetic situation in Bangalore. Some of the areas were very bad. Yes, that's because of unnatural growth of the city. Yes, right. So over to you. You have time till 8:55, and then we'll ask a couple of questions. Yes. Okay. So today I'm going to talk about Namaste Kishore ji. Namaste. Yeah, that special. Yes, the special namaste is the lacking. Yes. बैंगलोर के फ्लड की बात चल रही थी तो मैं सोचा मेरा नंबर नहीं आएगा आज. नहीं, आपका नंबर आए बगैर हम शुरू नहीं कर. थैंक यू. तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं. वो है PCOS. It's spreading like anything, like how you are talking about diabetes, how you are talking about thyroid. Today, we are also talking about PCOS. PCOS, as the name suggests, it is polycystic ovarian syndrome. ये उसका full form होता है. Poly मतलब many, मतलब ज़्यादा. Cystic मतलब cyst. Ovarian ovaries में होता है. Syndrome मतलब ovaries में बहुत सारे छोटे cyst हो जाते हैं. There's too many cysts in the ovaries. Okay. What does polycystic ovarian syndrome does? One, it increases your testosterone level in a woman. Okay. So women are supposed to have low or no testosterone, but it increases the testosterone. Now, what happens with increased testosterone? One, there is chances that you may miss your periods or there'll be irregular periods. The second is there can be a lot of hair in your body. So women develop hair in their face and it's very disheartening to them. Okay. There are a lot of psychological changes as well. Mood swings, lot of mood swings. Okay. Then there is also insulin sensitivity increases. So what happens? There are chances that if you have PCOS, you get into diabetes and you get into thyroid. So it becomes a vicious circle and it is very difficult to come out of this circle. And now, because the women are not able to come out of this circle, and not only women, in teenagers. So nowadays, a lot of teenagers are suffering from PCOS. So it is very important that once the PCOS comes, get it diagnosed. So go to your gynecologist or obstetrics and get it diagnosed that you have PCOS. Now, there are two types of PCOS. Okay, दो टाइप के लोग को PCOS होता है. एक कि जब आप जब बच्ची 13 साल की 14 साल की होती है और उसको पीरियड्स होना चालू होता है तो बहुत irregular होता है. There are chances she is genetically blessed with PCOS. Okay, that I am not saying PCOS is blessing, but what I am saying is that it may be from the start of her periods. Okay. The second type of PCOS, which you develop on the way, is like, for example, the child is very active, 8th class, 9th class. Suddenly 10th class comes, the child becomes completely inactive, not sleeping properly for 8 hours, eating all junk or eating at irregular intervals and all that, and consuming less water. So what happens is this lifestyle complete change, or generally young people who are just finished the college and
just went to the job and now they have irrational timing of work and, they go for parties. So no sleeping, again, irregular food. What happens? You develop PCOS. Okay. That is basically lifestyle oriented PCOS because आपका lifestyle सही नहीं है. उसकी वजह से आपके जो periods हैं वो irregular हो रहे हैं. आपको कैसे पता चलेगा कि आपको PCOS है? One very, very important sign is hair growth and your irregular period. तो कभी भी आपको irregular periods हैं, so don't avoid it. इसको address करें. Okay. So get yourself diagnosed so that you can work towards it. Okay. Now, I am here to demonstrate you yoga for PCOS, but there are 3 or 4 type of exercises which is must for PCOS. One very important rule of PCOS is you need to sweat. हर दिन at least हफ्ते में 3 या 5 बार आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपको स्वेटिंग हो. ओके. ये क्या हो सकता है? ब्रिस्क वॉक हो सकता है, आपका जॉगिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है. So basically all the cardio endurance exercises is very, very important for 3 to 5 days, at least 30 minutes. It is very important. Okay. दूसरा बहुत important ट्रेनिंग जो PCOS को करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो अगर आप वेट्स नहीं उठाते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 खाना चालू करिए. एंड it is for the teenager also. It's not like if you are 13 you can't lift weight. You need to lift weight but under guidance. Okay. So maybe visit your physio or a trainer who can help you with PCOS. Okay. Third very important training which helps in PCOS is HIIT. Okay. That is high intensity interval training. What is HIIT? HIIT is आपके जैसे 7 स्टेशंस बना देते हैं, 7 तरीके की अलग एक्सरसाइज. आप इस स्टेशन में आप 40 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स वर्कआउट कर रहे हैं, 10 सेकेंड दूसरे स्टेशन में जाने के लिए या दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए या पोजीशन चेंज करने के लिए, वापस 45 सेकेंड. सो मे बी 40 to 45 सेकेंड वर्क, 10 to 20 सेकेंड ब्रेक, 40-45 सेकेंड, then 20. So in that 45 seconds, you put complete high intensity because you're supposed to sustain it for just 45 seconds. So 15 to 30 minutes, 15 minutes to 30 minutes of a high intensity interval training is very good. Of course, you need to do warm up and cool down. उसके बगैर आप नहीं चालू कर सकते हैं. तो ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं. चौथा is of course yoga. मैं आपको योगा के कुछ पोजेस बताऊंगी which अच्छा, कौन से योगा के पोजेस आपको PCOS में हेल्प करते हैं? 1 हिप ओपनर्स, जो भी हिप को ओपन करे ना वो पोजेस. सेकंड एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग, जो एब्डोमिन को स्ट्रेंथन करते हैं. तो आप प्लैंक कर लीजिए, नौकासना कर लीजिए, वो वाले पोजेस PCOS को हेल्प करते हैं. थर्ड बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. सो आप सुपरमैन, कैट एंड कैमल, सेतु बंदासना मतलब ब्रिज पोज, ये सब बेसिकली आपको PCOS में हेल्प करेंगे. ओके. सो योगा का 3 रोल है. 1 हिप ओपनर, 2 एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग, 3 बैक स्ट्रेंथनिंग. ओके. ऑफ कोर्स यू कैन कंबाइन इट with lot of pelvic floor muscle exercises or Kegels. Okay. Kegels all together is a big topic. Okay. Now, the next is very important is it affects psychologically. It actually breaks the confidence in your body because there is lot of weight gain as well. Okay. So women, and I said unnatural hair growth. So women start looking at themselves real down. It affects you psychologically. It causes lot of stress, which again increases PCOS. So it is very important to be stress-free when you are trying to have a war against PCOS. You want to win that war, right? So you need to chill a lot. For chilling, your breathing exercises and pranayama will help you a lot. Okay. So today we will be talking about some of the asanas which can help you in PCOS and maybe 3 pranayama which can help you in PCOS. It is very important that you perform this asanas every day along with the other exercises I have told you. So just doing these 5 asanas won't help you. You need to, as I said, sweat. You need to have little high intensity training. You need to have strengthening. Very, very important.
Okay, so let's demonstrate the asana. As I said, hip openers are very, very good. So you can actually open up your hip in butterfly or Buddha Konasana. Okay, so you can bring your ankle towards your groin area. If you are, trying to conceive and not able to conceive, and you are in a you are a PCOS patient, then if you're trying to conceive, then your ankle should not cross your knee line. Okay, so it should be slightly away. Okay, but otherwise you can bring it as near to you as possible. Keep breathing in and out and try to open up your hip as much as possible. Very important is you don't hold your breath. Yoga, it is all about connecting with your breath. तो अगर आप सांस को होल्ड करके रख रहे हैं तो वो योगा नहीं है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सांस अंदर लेते रहें और सांस बाहर लेते रहें और मुस्कुराते रहें. बहुत इंपॉर्टेंट है. पीसीओएस में आप स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं. Breathe in, go back, breathe out. You come as down as possible and hold it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax and come back. आप ये जो स्ट्रेच मैं बता रही हूँ वो आराम से 3 से 5 बार कर सकते हैं. होल्ड टाइम आप 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक रख सकते हैं. So breathe in, go back, breathe out. Come on to your elbow and hold it here as much as possible and relax. Another thing which is very good as a hip opener is both the legs front, okay? Both the hands in the front. Breathe in, breathe out. Just drop it to the side, okay? Breathe in, breathe out. Drop it to the side. Breathe in, breathe out, drop it to the side. Now, knee is very much in line with your ankle of the another leg. So my right leg, my ankle is or heel is touching the knee. Okay. So again, breathe in, come back to the center, breathe out, go to the other side. Okay. So this is one of the hip openers which you can do. Another thing, as I said, abdominal and back strengthening. So both the legs together, breathe in all the way back, breathe out, come all the way down as much as possible. Try to bend your elbow as much as possible. Make sure you don't bend your knee. Now, if you're not able to come till your toes, you can actually hold on to your ankle and wherever it is possible, and then hold it there as much as possible. Okay, so breathe in. Breathe out. Come all the way down as much as possible. Hold it here. Don't hold your breath. Keep breathing in and out. And again. So again, you can hold the stretch for 10 to 20 seconds and repeat it for 8 to 10 times. Okay. You can also go to the side stretch, which is basically again for your both spine. Okay. So you can bring your left leg towards the groin area. Your right leg is actually going to an angle. Breathe in, breathe out, go all the way forward and try to hold the ankle and don't hold your breath, as I said. Okay, and repeat it 7 to 10 times. Now this you can do 2 ways. One is going forward. So when you go forward, what will happen? Your abdominal muscles will contract and your spine will stretch. Now, the other way you can do it actually is going to the side. So you can actually go right hand front and then the left leg, you can go all the way side. So it will stretch your spine. Okay. How much to hold the stretch? The stretch can be held for 10 to 20 seconds and you can repeat the exercise 3 to 5 times on both the sides. Very, very important. Okay. Now, the next exercise which we can do is basically, as I said, butterfly. You can even do it reclining butterfly. Reclining butterfly is basically sleeping butterfly. So you can actually get into Konasana or Baddha Konasana or, the butterfly pose, and you can actually lie down. So
And while lying down, you come onto your elbow, okay? And try to go back as much as possible. So you are basically reclining back, and that's why it's called reclining exercise. Baddhakonasana. Now, another thing which I said is back strengthening. So, Setu Bandhasana or bridge pose, both the hands clasp it together, breathe in, take it all the way up. Keep breathing in and out. Hold it there for 5 to 10 seconds. And relax and come back. Again, breathe in. Don't hold your breath. Keep breathing in and out. Hold it there. The contraction, not the breath. Okay, breath you have to keep breathing. Breathe out and bring it down. Okay, so bridge pose is very, very, very good. Another thing which you can do is basically Superman pose, which is, so you can do lotus pose, Superman pose, that is Shalabhasana. Okay, so for the lotus pose, you have both the hands in the groin area. Okay, breathe in. Keep breathing in and out. Hold it there 5 to 10 seconds and relax. You can either keep your hands on the groin area or keep it out and go like this, or you can do the Superman pose, which is going all the way up and going all the way down. Okay, holding time again 5 to 10 seconds, and repetition should be around 8 to 10 for this. Okay, you can even do Dhanurasana. Dhanurasana repetition will be lesser, 3 to 5 repetition, but holding time should be more. Okay, Dhanurasana, you bring your ankle towards your hip area and hold it. Okay, so you hold your ankle and try to go up as much as possible and hold this pose, not holding your breath. Okay, Dhanurasana, as I said, you should do 3 to 5 repetition, holding time 10 to 20 seconds. Again, what you can do is cat and camel. Now for cat and camel, very important is, because you're doing it for PCOS, more attention towards the pelvis area than your neck area. The neck movement will be minimal and your pelvic movement will be more. So breathe in and breathe out. And breathe in and breathe out. And breathe in and much of a neck movement. My whole concentration is my pelvic area. Another thing which I can do like a sequence is basically going from child prone going to Bhujangasana. Okay, and breathe out, child pose. Breathe in, Bhuja. Breathe out, child pose. Breathe, Bhujanga. Okay. There are, as I said, abdominal strengthening is very, very important. The 2 abdominal exercises also I can tell you. One is mill churning pose where both the legs are separated. Breathe in, breathe out. You go forward, breathe in, come back. Breathe out. You go forward, breathe in, come back. And you can do both clockwise and anti-clockwise. आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, clockwise और anti-clockwise. कितने बार करना है? Clockwise 10 to 15 times, anti-clockwise 10 to 15 times. बस एक बात को ध्यान में रखिए, जब आप सामने जा रहे हैं तो आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, जब आप पीछे आ रहे हैं तो आप सांस को अंदर ले रहे हैं. नौका आसना भी कर सकते हैं, which is basically taking both the legs together and taking it all the way up. Okay, so I will show you from the side. You actually, your head, your back is straight, your neck is straight, and holding on to it. Some people find it difficult to hold it. In that case, they can bend their knee and try to hold it. Again, not holding the breath, just trying to hold the pose. You can hold it for as much time as possible and repeat it 5 times to 8 times. Okay. Forward bending poses are also very good. So
Any poses in which you are actually spreading your leg and trying to come down, so you can actually bend your knee and trying to come down and trying to open up your hip. This is very good. Even the Malasana or quads is very good. So any pose in which I am basically opening up my hip and trying to strengthen my pelvic floor muscle. Hold this pose for 8 to 20 seconds, 10 to 20 seconds, and breathe out and come back. Breathe in, breathe out, go all the way down, keep breathing in and out, hold it there, and then again go back. So these are some of the asanas which you can do for PCOS. I also said that I will tell you 3 pranayam which you can do for PCOS. One very, very important is Kapalbhati. Kapalbhati is an amazing pranayam, and how much time you should do it? You can try doing 20, 20, 20, 3 times, which is basically 20, take a break, 20, take a break, 20. Start with that. You time it. As in, if that 20, 20, 20 is becoming almost a minute, try to do Kapalbhati now 40, 40, 40. Okay, so almost double. So you will be able to do it for 2 minutes or 3 minutes. So then increase the time. You can definitely come to a time where you are able to do Kapalbhati for almost 5 minutes. Okay. Second, which is very important, is to calm you down. There's a lot of anxiety when you have PCOS. Then to calm you down, to cool you down, Nadi Shodhan Pranayam or Alom Vilom Pranayam. Third is basically Brahmari. Brahmari can be done just by closing your earlobe or by Swarnamay Mudra and doing 7 to 10 breaths or 7 to 8 you can do. Okay, so I will demonstrate Kapalbhati, Nadi Shodhan and Brahmari. Okay, Kapalbhati is abdominal breathing. Okay, so you breathe in normally, complete normal breath or normal inspiration. Saas andar normally le. Breathing out, you use your abdominal muscle. You need to understand abdominal muscles are very, very important muscles for breathing. So in this, there is forceful expiration, normal inspiration. As I said, 20, take a break, 20, take a break, 20. So let's just do 20 breaths. It will also improve your metabolism, which actually slows down during PCOS. So this is about Kapalbhati. Nadi Shodhan, you start with your active nostril. So check which is your active nostril. Now I am able to breathe more from the right nostril. So I start with right nostril. Go to the left. Breathe in from left. Go back to the right. So that's your one cycle of Nadi Shodhan or Alom Vilom Pranayam. You should definitely do somewhere between 2 to 5 minutes of Nadi Shodhan Pranayam. It will help you manage your stress and it will bring all the psychological factors related with PCOS little down. The third is Brahmari, which actually use your thumb to close your earlobe and close your eyes with index finger and middle finger down the nostril, little finger down the lips. Take a normal deep breath in, breathe out. Breathe in Brahmari. And relax. Brahmari is very relaxing. I just do Brahmari and get into meditation mode.
Okay, so how many times you should do Brahmari? You should do around 7 to 8 breaths of Brahmari. That's good enough. That's very good. Okay, so, but very important is you have to be consistent. You cannot give up. It takes time. Very important to understand it. It takes time. If you will not get result in 15 days or month time, just be consistent with your exercises, with your pranayama, with your stretches, with your strengthening, with your cardio. And I'm 101% sure that you will win your war against PCOS. As I had PCOD, which has become a disorder, but I am able to come out of it without any IVF. I have 2 children. And if I could get my reproductive cycle back, you can also do that. Okay, thank you so much. So I would request Kishore and Shankar to bombard. Welcome back. Welcome. Thank you, Dr. Pandey. That's a wonderful session that we had. Of course, this is, as you said, this particular ailment PCOS is spreading fast and wide thanks to the lifestyle changes that we are witnessing these days. Now, my first question to you is, what are some of the challenges you see with the majority of young girls and women while dealing with PCOS? One is lack of consistency, for sure. Okay, they want result, like they don't have patience with PCOS. You need to follow your diet timing very regularly. They will tell me, ma'am, we are in job, how to follow the diet timing. I said, if you want to come out of it, you have to follow diet at this particular time. You have to do exercises every single day. And it is not that they feel that if I can take pills, of course, there are hormonal pills which will bring your periods again, right? So they feel, okay, let me take pill and this month we will get into the period. It is very important to understand that there is all this harmony of hormones in your body when you have PCOS. Okay. Now, again, you're popping pill. And again, the more disharmony is happening. So I tell everyone, be consistent and have patience. And you have to be very, very regularly following the same protocol. They get bored following the same protocol. They want new changes. I said, I can change your exercise form, but you have to be consistent. You have to do that. So if you want to win your war against PCOS, very important is give yourself that 6 month, 1 year of being consistent with your exercise. And you have to do it later on because your body is actually got tendency to get PCOS. So you have to do it even later on as well. You have to be having an active lifestyle. You cannot be in a sedentary lifestyle. Unfortunately, we are here in an instant generation where you have instant coffee, instant tea, you have instant delivery systems with everything is delivered in 10 minutes. Yeah, Maggi noodles, 2 minutes. Maggi noodles, everything, yes. Now I remember that there was earlier advertisement, jokingly said that a pizza that's not delivered within 30 minutes and the pizza comes free. Yes. The same person became an obstetrician and said, if I'm not able to deliver your child within 30 minutes, it comes free. Yeah. So that's the instant thing that we are having these days. Yes. But I would like to ask you, what is the role of stress in all this? Because does it cause PCOS or does it aggravate PCOS? It aggravates PCOS. Okay. PCOS can be caused because of your lifestyle changes. Yes, stress can be one of the factors, but only stress won't cause PCOS. Okay. It has to be, because if you have stress, then you're not sleeping also properly. Not sleeping properly will cause you PCOS. Okay. So stress plays, and of course, because of the hormones, there is so much of mood swings, which again causes a lot of psychological stress to increase. Okay. Which again worsen your condition. Understand that what is happening is because of the hormones which are happening, and it not only for say PCOS, it is also for menopausal women. They get so panic attacks, anxiety and all that. That's because hormones play a lot of role in your psychological. But see, as soon as you start exercising, your endorphins starts getting released. Okay, now when endorphins release, you start feeling happy.
So, but the endorphins need to release every single day to make you feel that. Okay, so it is very important that if you want to combat stress, you need to be very regular with your breathing exercises or pranayama. And secondly, you need to be active, because that will help your hormonal balance than anything else. And then it will help you psychologically as well. Speaking of sleep cycles, we have a sleep expert here, Ms. Divya Prakash. She has always been emphasizing on the need for proper sleep, which this generation, does not have, thanks to Netflix. When I tell my patients you can actually lose weight if you are sleeping properly, they don't believe me, but you can actually be better with your weight management also if you sleep. Sleep is very, very important. That's right. Sleeping not in the morning at 3 o'clock, sleeping in the night as uninterrupted sleep. Very, very. That's right. So what do you, Kishore, for your round of questions? पूजा जी, एक तो हमारा बेसिक सवाल ये है कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या अंतर है, और जो आपने आसनास बताए आज, क्या वो दोनों में लागू होते हैं? तो पीसीओएस क्या है? अगर आप दिन में एक बार चाय कभी कभार पी लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन भी पी लेते हैं, 3 दिन पी लेते हैं, बट दिन में एक ही बार पी रहे हैं, तो आपको पीसीओएस है। पर आप दिन में अगर 5 बार पी रहे हैं और अगर नहीं पिए तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपका सर दर्द हो जाता है, तो आपको पीसीओडी है। पीसीओडी मतलब डिसऑर्डर हो गया है। That means it is also causing lot of other changes. As I said, पीसीओएस की वजह से आपको डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज की वजह से आपको थायराइड हो जाएगा, तो आप एक विशियस सर्कल में चलते जाएंगे। वेट गेन, अनलिमिटेड वेट गेन, नहीं हो रहा, ओबेसिटी हो जा रहा है। तो एकदम जब आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, उसको डिसऑर्डर बोल देते हैं, ठीक है। पर निकलने की संभावना जब होती है तो उसको आप पीसीओएस या सिंड्रोम बोलते हैं। अभी आया है, देयर आर चांसेस, इफ यू करेक्ट योरसेल्फ यू विल गेट बेटर। ऑल्सो इफ यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड विद इट, मतलब आप जब से आपको पीरियड्स आ रहे हैं तब से इरेगुलर है और देयर इज अ कंप्लीट डिसऑर्डर, तो फिर वो आपका यू बॉर्न विद दैट डिसऑर्डर, मतलब वो बाहर निकल नहीं पा रहे। दो यू आर अ वेरी एक्टिव चाइल्ड, एवरीथिंग इज good about you, but still you are missing your periods. Okay, still there are all the PCOS symptoms which you are. So then आप 13 साल में जब आपको पीरियड आया, आप 22 साल तक आप डिसऑर्डर पेशेंट हो जाओ, 20-22 तक। ओके, तो जब वो सेट हो जाता है तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अगर डिसऑर्डर हो जाए या पीसीओएस ही रहे, आपने जो आसनास बताए हैं, क्या उसका क्योर होता है उससे, या सिर्फ प्रिवेंशन के लिए? 100%. Not. It is not about what I am saying. I was a PCOD patient. Okay? In my life, मतलब जब मैं शायद 9th क्लास में थी तब मुझे पहली बार पीरियड्स आया था। उसके बाद जब तक मेरा दूसरा बच्चा नहीं हुआ है तब तक मेरे को लाइफ में कभी रेगुलर पीरियड्स नहीं आया, कभी भी नहीं। बट मैंने कभी छोड़ा नहीं, ये आपको याद रखना होगा कि मेरे को ये 100% विश्वास था कि कभी ना कभी आई विल बी आउट ऑफ इट, एंड एक्चुअली टुडे आई एम आउट ऑफ इट। आई एम नॉट इनटू एनी मेडिकेशन, नथिंग. It is purely by exercise, and of course my lifestyle has been always good, so lifestyle was never a problem, but I was blessed with PCOS, but PCOD, but now I am out of it. I am absolutely out of it. Okay, तो आप consistency, मतलब आप सोचिए, मैं पीसीओएस थी और अब जाके मेरा पीसीओडी खत्म हुआ है, अब जाके। ओके, बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप। मैंने नहीं बोला कम नहीं हो रहा है तो छोड़ो, अब छोड़ देते हैं, या फिर या नहीं हो सकता, आई गिव अप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सिंड्रोम और इट इज अ डिसऑर्डर. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड कांट गिव अप. कांट गिव अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप गिव अप मारेंगे तो आप कभी नहीं आ सकते बाहर. और मैंने जैसे बोला कि इट हैज टू हैव कॉम्बिनेशन वर्कआउट. आप सिर्फ योगा से नहीं कर पाएंगे, आपको स्वेट भी करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा, ब्रीदिंग करना पड़ेगा. तो ये सब कॉम्बाइन करेंगे तभी हो सकता है. एक बात और कही जाती है कि पीसीओएस या पीसीओडी में अगर ये सब करते रहें जो आपने बताया, एक्सरसाइज करें, जंक फूड अवॉइड करें, योगा करें, सब कुछ करें, तो एक एज के बाद अपने आप वो खत्म हो जाता है, मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. मिथ है या सच्चाई है?
100% सच्चाई है। मैंने कभी भी पीसीओएस के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। हाँ, मेरे को बहुत, जैसे 4 महीने हो गए पीरियड्स नहीं हुआ, तो आपको हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ती थी, ठीक है, तब आपको हार्मोनल पिल्स लेनी, या फिर जब मेरे को मतलब रेयांश कंसीव नहीं हो पा रहा था तो मैं IUI साइकिल में थी, तो व्हेन यू आर इनटू IUI साइकिल दे विल पुट यू इन पिल्स फॉर सम टाइम एंड देन टेल यू टू कंसीव। बट फिर मैंने एक दिन बोला कि नहीं यार, मुझे अब पूरी पिल नहीं खाना है, मुझे बस छोड़ देना है, आई विल जस्ट डू राइट एंड आई नो कि वन डे इट विल हैपन राइट, एंड इट हैपेंड। ओके, so both my kids I conceived without the medication that itself is और ये कोई किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंसीव किया है पीसीओएस। मैं एक्सरसाइज क्लासेस लेती हूँ, तो I know that you can win your war against infertility with the consistency. तो हाँ, आप बिना मेडिकेशन के भी निकल सकते हैं। रादर आप देखें तो पीसीओएस की कोई मेडिसिन होती नहीं है, इट्स ओनली सिम्टोमैटिक रिलीफ होता है कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो पिल खाइए, पीरियड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पर वो पीसीओएस निकालने नहीं वाला है, निकालना तो आपको अपने लाइफस्टाइल से और अपने खाने से और अपने सोने से ही निकालना हो। थैंक यू पूजा जी। ओवर टू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. I think one of the de-stressing formula or method is when Pooja Pandey speaks in Hindi to Kishore. है ना? किशोर जी and I have a very special connection. Yes. मेरे को पक्का पता है कि जिस दिन मैं किशोर जी से मिलूंगी उस दिन हम लोग बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। और बेंगलोर अगर अब पूरी तरह से पानी से मुक्त हो गया हो तो हम लोग मिल सकते हैं। हाँ जरूर। आप बेंगलोर में आए हैं क्या? नहीं, आ जाऊंगा, इसमें क्या है। हाँ जरूर। He'll make a special trip to meet you. Don't worry. Yes. No, we should all make a special trip to some place and meet. Yes, that's right. और मुझे लगता है दिव्या जी भी वहीं रहती है, तो हम लोग एक पार्टी हो जाएगी। Yes. And just in conclusion, you said de-stressing is very, very important, and I think Pooja Pandey will also agree that there is a big role for the family to play in the whole thing, so that because these people, especially young girls, need family support. Yes. That is very, very important. Yes, so, very important. Yeah, thank you very much. It was a wonderful session. Thank you. Dhanyawad Kishore ji. Thanks, Shankar. Thank you. Well, welcome back. We now have a special session on mindful eating during pregnancy, another important topic concerning women. And for this, we have with us Ms. Divya Prakash, a wellness prana, wellness therapist, and founder of wellness venture Metamorphosis. She's an accredited dietitian, nutrition counselor, certified psychological counselor, a deep sleep mentor, and a qualified yoga practitioner. Welcome, Ms. Divya. It's always wonderful having you with us for your sessions. Thank you very much. And I hand over the platform to Kishore for his first round of questions. Thank you, sir. दिव्या जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो उसमें खान पान की क्या सावधानियां रहती है, और मतलब कोई रहती है सावधानियां, जरूरत पड़ती है? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है दिव्या जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, वॉल्यूम। We were not able to hear you. Hear me now? हाँ, Yeah. yes. आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Yes. Hello? Yes. Continue. Okay. But I am not able to hear you. We can hear you. There must be some problem from your side. I think you can go to the direct computer audio. Probably that might help you. Can you hear me now? Yes. 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 Thank you so much, Mr. Kishore, for calling me again on your show.
आपका ये जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ बेसिक जो है वो बताना शुरू करूंगी. प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन. बोलते हैं ना कि एक औरत कंप्लीट होती है जब वो माँ बनती है. यहाँ पर एक प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इट्स नॉट अ सिकनेस कि अचानक ही लाइफ में चेंज हो गई है. तो Sorry to interrupt you, Ms. Divya. I think there is some disturbance also coming in. Background noise. You sure? Do you hear it? Just Yeah, give me 1 sec. I can Just- hear, but there is some humming. That's what, humming. Just 1 sec. Just 1 sec. Yeah. Is it okay now? No, it's still that humming is still there. Just let me allow to leave and I will join again. Just 1 Okay, sec. sure. Okay. Well, for our viewers, this particular episode was on mindful eating during pregnancy, which is an important topic. And the coming topic would be on cervical cancer and the remedies and vaccination, management, all these things, diagnosis, all these things would be there in the next hour. Yes, Kishore, you want to add anything? Sir, I just wanted to ask a question. Do you follow the instructions suggested by these diet specialists regarding diet plan? To a large extent, I do, but my one basic thing is I avoid junk food. And as far as possible, I go in for vegetables grown in our own place, that is in our own garden. And you can make the taste difference when you have vegetables plucked out of your garden and the vegetables that you buy in the market. So that plus good sleep and fresh air, which I have plenty over here, thankfully, that is the change that I do. But as far as, and I also reduce carbohydrate. So these are some of the changes that I make. But there are these have all shown a lot of results also. I continue that, but it's not just overnight that I have started it. I have started it quite some time back. And I'm a fish eater, so I eat fish also. Fish is a very, very important food. Yes. I avoid meat. I have problems with food. I'm a diabetic, but I cannot live without rice and potato. Yeah, I'm also diabetic in the sense I'm a borderline. So what I do is I reduce the rice content and I increase the vegetable content. So, what happens is ultimately it is satiation that is important, that you feel your stomach is full. So I used to have plenty of rice, but what I do now is I have 2-3 varieties of vegetables on the side. So that is also, very good. And also sugar, reducing as far as possible. We in Keralites, we are very fond of paisams, which is, very, very delicious. So, but I have it only occasionally. Otherwise, diet management is also very important. But my suggestion to you is that, yes, you can go ahead with eating rice, but reduce the quantity. If you're eating 2 spoons, then reduce the variety. You reduce it to 2/3, then reduce it to half. But you will not find much of a difference even if you reduce it. So increase your vegetable quantity. But potato, of course, I don't know, North Indians, of course, famous, including Lalu Prasad, who said, till there are potatoes, he will be in politics. Samosa and aloo, they're all very famous in the North. Yeah, this is back. Yes, Can you hear me now? Yes, perfectly right. Yes, loud and clear. Yeah, sorry for the inconvenience. No issues. Yeah. तो मैं बता रही थी कि प्रेगनेंसी के बारे में, जैसा कि एक मिथ है कि जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वी स्टार्ट टेकिंग मोर केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बट एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए. प्रेगनेंसी के लिए वी शुड प्रिपेयर आवर बॉडी इन एडवांस. जैसे कि हमारा बॉडी प्रिपेयर करता है जब एक लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है. ऑल पेरेंट्स शुड ट्राई टू फीड देम हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, जो कि ये मिसिंग होता है. हम वेट गेन करते हैं. अभी डॉक्टर पूजा वाज आल्सो मेंशनिंग
कि हम वेट गेन करते हैं, PCOS, PCOD जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जंक फूड की हैबिट्स होती है, देर रात जागना, नो फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे करते हुए हम अपने बॉडी को खराब कर लेते हैं। बहुत सारे डाइट प्लान, फैट डाइट्स यूज करते हैं, कीटो डाइट, पेलियो डाइट, आई डोंट नो विच ऑल काइंड ऑफ डाइट दे फॉलो। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो ऑल ऑफ ए सडन दे फील कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो गई है, आई शुड स्टार्ट लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। और वहीं पर हो जाता है कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट नहीं होकर एक सिकनेस बन जाती है। एंड हम सोचते हैं कि स्पेशल केयर लेकर के हमारी प्रेगनेंसी ठीक हो जाएगी। आपने देखा होगा कि सी सेक्शंस बहुत बढ़ गई है, पूरी प्रेगनेंसी लेडीज अच्छे से खा नहीं पाती हैं, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर प्रेगनेंसी। जबकि ये एक ऐसी पीरियड होनी चाहिए जो कि हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हमें डिफिकल्टी के बजाय हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, गुड हार्मोन्स आते हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, पर वो हम नहीं कर पाते। और मिथ के अकॉर्डिंग है कि हमें सिर्फ अच्छा खाना खाकर कि अपने प्रेगनेंसी, दैट मीन्स कि 9th मंथ को बहुत अच्छे से करना है। तो जो सबसे पहला थंब रूल होता है वो यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के समय से अपना ख्याल नहीं रखा है तो एटलीस्ट बिफोर 1 year ऑफ कंसीविंग यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ। बॉडी को एक बोलते हैं ना, सीड को अगर हम सॉइल में डालते हैं कि उसका एक प्लांट ग्रो करे, तो उसके पहले हम बेड को तैयार करते हैं, सॉइल बेड को तैयार करते हैं, अच्छे से गुड़ाई करते हैं, पानी डालते हैं, व्हाट्सोएवर। जब सीड अच्छा होता है, जब सॉइल बेड अच्छा होता है और उसमें अगर हम फर्टिलिटी के लिए कोई सीड डालते हैं तो अच्छा जर्मिनेट करता है और हेल्दी प्लांट ग्रो करता है। सिमिलरली एक लेडी का जो वूम होता है वहां पर प्लांट करने के पहले जो सॉइल बेड है वो लेडी का बॉडी होता है, तो उसे प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। तो नॉट जस्ट आफ्टर द गेटिंग प्रेग्नेंट, बल्कि प्रेगनेंसी से पहले करना चाहिए। कंसीव, अब आज के डेट में सभी के 1 या 2 बच्चे होते हैं और अनप्लान्ड कोई भी नहीं सोचता है, तो वी मस्ट प्लान बिफोर 1 year ऑफ कंसीविंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, जो इनिशियल 3 months होते हैं, ट्राइमेस्टर वाइज हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, उस समय बेबी के जो बॉडी में जो फीटस बोलते हैं वहां पे बहुत सारी ग्रोथ होती है। स्पेशली जब भी हम बताते हैं सारे पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम धीरे धीरे वहां पे प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो बेबी का स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का डेवलपमेंट वही शुरू होता है। अगर जब तक हमें पता लगता है कि प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट है, इट मीन्स कि आपके जैसे 45 days, ये साइकिल कहाँ से शुरू होता है? योर लास्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसको डॉक्टर काउंट करते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ। हमें कभी पता चलता है जब हमारी एक साइकिल मिस हो जाती है, उसके 10 to 15 days जब HCG फॉर्म होने लगता है। इतने देर तक तो बेबी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अगर आप एक हेल्दी मदर नहीं है, आपकी लेडी नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आप माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंट है, तो जो उसका स्पाइनल ट्यूब और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि अगर वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, और बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि स्पाइनल बाइफिडा हो गया बच्चे में, या उनकी जो ब्रेन है वो उतनी शार्प नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हेल्दी डाइट पहले से शुरू करनी चाहिए। अगर हम हेल्दी डाइट खाने शुरू कर दे तो किसी पिल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस समय बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा, जो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड, जो कि बी ग्रुप का विटामिन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें चाहिए कि उसको पहले से लेना शुरू कर दे। फोलिक या तो अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, एग्स, ये सब हम ले रहे हैं रूटीन में, कंप्लीट बैलेंस डाइट ले रहे हैं, देन इट्स ओके। अदरवाइज यू मस्ट स्टार्ट टेकिंग फोलिक एसिड टैबलेट 400 to 600 माइक्रोग्राम बिफोर कंसीविंग। बॉडी जब हमारी तैयार हो गई उसके बाद प्रेगनेंसी डिफिकल्ट नहीं होता है। बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ। इस समय बेबी का ग्रोथ तो कम होता है, पर ऑर्गन सिस्टम का डिवीजन
बहुत तेजी से होते रहता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, लेकिन अगेन इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आप फिजिकल एक्टिविटी करते आ रहे हो और आपको कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, आप अच्छे से सो रहे हो, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये 3 मंथ के भी जो टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होंगे। उसके अलावा जो चीज होता है वो होता है स्ट्रेस, कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और पूरे लोग आपको इतने सारे सजेशन देते हैं, बाहर मत जाओ, भारी मत उठाओ, घूमो मत, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पपीता मत खाओ, इससे अबॉर्शन हो जाएगा। ये जो इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दिमाग में और आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसलिए खाने के लिए क्या स्पेशल खाना चाहिए ये बताना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट पहले से खाते आ रहे हैं, कुछ भी नया स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है। आपको के बॉडी को सारे विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा आपके डाइट में विटामिन डी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी चाहिए, आयरन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। और ये सारी चीजें अलग अलग पिल्स से लेने की जरूरत नहीं है अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं। दिव्या जी, आपने 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स की बात की। बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती है, अकेले हस्बैंड के साथ रहती है, तो उनको गाइड करने वाला उस समय कोई होता नहीं है। क्या फर्स्ट 3 मंथ्स में किसी खास एक्सरसाइज की जरूरत है या उसमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? आपने मिथ की भी बात की, बहुत से मिथ है इसके साथ जुड़े हुए, तो क्या एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए या हल्के एक्सरसाइज करना चाहिए, या 3 महीने तक बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? क्या है इसके बारे में? किशोर जी, यहाँ पर एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका बॉडी यूज टू है, कैन यू हियर मी? हाँ, यस। हेलो? हाँ, यस यस, आई कैन हियर। योर वीडियो इज नॉट देयर, यू आर स्टिल, बट ऑडियो इज देयर। I think she has lost the connection. हाँ दिव्या जी, आप बताइए। हाँ, कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये अगेन मैं बोलूंगी कि मिथ नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन के आंसर में बताया कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रेगनेंसी के 1 साल पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। आजकल सभी लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, अनप्लान बहुत कम प्रेगनेंसी होती है, एंड इट्स अ लाइफ टाइम, लाइक यू कैन से कि 1 या 2 बार आपको प्रेग्नेंट होना है, तो यू मस्ट प्लान। और अगर आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी है, आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको या कुछ नहीं करना है या कुछ नया शुरू करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेरेना विलियम्स ने अमेरिकन ओपन जीता था अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो एक जो मिथ है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट हो गए तो बैठ गए। 1980s के टाइम में, मतलब इसको बोलते हैं कि स्कैंडल हुआ था कि जो एथलीट्स होती थी, दे गेट प्रेग्नेंट जस्ट बिफोर द इवेंट, क्योंकि जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो आपके एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस को इनहेंस करते हैं। उस समय बैन लगा कि प्रेग्नेंट वुमेन जो इमीडिएट प्रेग्नेंट है, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन ओलंपिक इवेंट। इसलिए नहीं कि देयर वाज समथिंग लाइक जेंडर बायस, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। पर ये बोला ना कि जैसे लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन होता है और उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप शुरू से कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हाँ, फिजिकल टच वाले और ओवर एक्सर्शन वाले स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, जहाँ बास्केटबॉल, जहाँ काफी एक्सर्शन हो रहा है, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप एक योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज योर रूटीन लाइफ, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने कभी भी कुछ नहीं किया है और प्रेग्नेंट होने के बाद नाउ आई एम प्रेग्नेंट, आई शुड डू समथिंग, तो प्लीज टेक रेस्ट, क्योंकि योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू। इसीलिए ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो आपकी रूटीन लाइफ है। और हर वो काम आपका बॉडी इंडिकेटर है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, आपका पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ रहा है, यू आर फीलिंग लाइक कि स्वेटिंग हो रही है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल,
then please don't do. Nobody can advise you. Sit and relax. That's the only thing. आपने सेरेना विलियम्स की बात की. हमारे यहाँ भी फिल्मों में ये दिखाता है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो माँ कहती है कि बेटा तुम आराम करो, दिन भर आराम, कोई काम करने की जरूरत नहीं, और सास कहती है कि नहीं काम करो. तो हम लोग सास को गलत मानते हैं और माँ को सही मानते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों तो माँ ही है. ये तो अपनी थॉट प्रोसेस है कि हम कैसे लेते हैं. ये सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये जो हमारी माइंडसेट होती है, कुछ भी गलत नहीं है. फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए. मैंने फर्स्ट लाइन बोला, प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट, इट्स नॉट अ सिकनेस. हाँ, ये कुछ कोई इंडिविजुअल होता है, जैसे किसी की प्रेगनेंसी होती है, लो लाइन प्लेसेंटा बेबी होता है, उनको एक्सर्शन नहीं करना चाहिए. बट ऑल प्रेगनेंसी में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है कि हमें बैठ करके करना पड़े. आपने देखा होगा केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के. क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है. वो खाना खाते हैं और दैट टू प्यार में ढेर सारा खाना खाते हैं विदाउट माइंडिंग. वो बोलते अभी एक के लिए नहीं, 2 के लिए खाना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको अगर न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत है, दैट इज ड्यूरिंग लैक्टेशन. मदरहुड कंप्लीट नहीं होता है 9 मंथ में. मदरहुड कंप्लीट होता है लैक्टेशन पीरियड में. लैक्टेशन पीरियड में यू रिक्वायर मोर फूड तभी. लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी तक अपना बहुत ख्याल रखते हैं, 9 मंथ तक. मे बी जब लैक्टेशन होता है, मे बी फैमिली सपोर्ट नहीं है, या तो फिर खुद इतने टायर्ड हो जाते हैं. स्पेशली जब फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, बच्चे को देखना, वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, तो हम अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं. देर रात तक जागना होता है, उनके साथ हम चीजें मैनेज नहीं कर पाते. इसलिए मैंने बोला है कि प्लान करना चाहिए. नॉट ओनली योर फिजिकल बॉडी, मेंटली ऑल्सो यू शुड prepare yourself with your husband. Take help of your husband, or some family is there, some family relatives are there, तो उनका सपोर्ट लेना चाहिए अपने को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए कि ये मदरहुड है और मुझे इसको इंजॉय करना है. दिस टाइम इज नेवर गोइंग टू कम बैक इन माई लाइफ. सो प्लीज एंजॉय. फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए. हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी रहती है, अदरवाइज वो गेस्टेशनल डायबिटीज कन्वर्ट होता है. और गेस्टेशनल डायबिटीज से ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज प्रोन होती है जो प्रेग्नेंट मदर है, बल्कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बिग साइज के होते हैं और वो डायबिटिक प्रोन हैं, टाइप 1 डायबिटिक प्रोन होते हैं. तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए. हाँ, पर ब्रेक देकर करना चाहिए. लोग बोलते हैं हमारे बैक में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि रीजन है जैसे जैसे हमारा पेट बाहर आना शुरू होता है, लेडी फील डिस्कम्फर्ट और वो पीछे की तरफ झुक करके खड़ा होना शुरू करती है. इससे बैक पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है. अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहे, अपने बॉडी को मजबूत करते रहें, खड़े होने पर अपना वेट अपने दोनों पैरों को दे, और ये अगर प्रैक्टिस करते रहे कॉन्शियसली, तो हमें बैक एक होगा ही नहीं. सो दीज आर फ्यू टिप्स. वेट गेन भी बहुत सारी लेडीज है अच्छे खाने के चक्कर में. आई हैव सीन 25-35 kgs प्रेगनेंसी में वो वेट गेन करती है. दिस इज अगेन हैम्पर्स देयर फिजिकल एक्टिविटी. जो सारे इश्यूज होते हैं, आइडियली 6 to 15 kg अगर आपके वेट बढ़ते हैं, देन इट्स अ हेल्दी वेट, और आपका बेबी अच्छे साइज का भी होगा और हेल्दी भी होगा. बिग बेबी डजंट मीन हेल्दी बेबी. बहुत बच्चे, अरे उनका बच्चा 4 kg का हुआ, इट डजंट मीन कि बेबी बहुत हेल्दी है. मे बी मदर को डायबिटीज है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाने पे बहुत वेट के साथ बेबी की साइज बल्कि छोटी हो जाती है, उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं. तो दीज आर फ्यू मिथ्स आई कैन से कि फिजिकल एक्टिविटी करना है, पर अपने बॉडी की सुनो. जहां आपको लगता है कि मैं टायर्ड हो गई हूँ, सिट एंड रिलैक्स, ब्रीथ एंड देन अगेन मूव. अगर कुछ हेवी नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट वॉक इनसाइड योर हाउस, और जो छोटे मोटे आप काम कर सकते हो हाउस होल्ड चोर्स जरूर करना चाहिए. कभी लेट करके नहीं रहना चाहिए. दिव्या जी, इससे पहले कि मैं शंकर सर को हैंड ओवर करूं, पहले एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा. जी. आजकल मिस कैरेज की घटनाएं बहुत बढ़ रही है. इसकी क्या वजह है? क्या फूड हैबिट्स है वजह, डाइट प्लान में गड़बड़ी है, या एक्सरसाइज की कमी है? क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए शंकर जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से ही यही बता रही हूँ. प्रिपेयर द सॉइल बेड फॉर सीड.
अगर आपका बॉडी स्वस्थ नहीं है, आप बताओ, लेट्स सपोज आप सभी जानते हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल है जो सभी लोग करते हैं, हम धनिया कोरिएंडर सीड्स को डालते हैं। अगर मिट्टी टाइट हो या मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं हो, अगर हम सीड को बिना सोक किए डाल देंगे तो क्या वो कोरिएंडर लीव्स आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे भी तो वो इतने पतले दुबले होंगे कि वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो ये जो मिसकैरेज का है, ये हम अपने बॉडी को, लेडीज अपने बॉडी को प्रिपेयर नहीं करती है। लाइफ इंस्टेंट हो चुकी है, अभी जस्ट शंकर जी ने मेंशन किया, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। वी डोंट हैव पेशेंस, वी डोंट एंजॉय आवर लाइफ, वी डोंट लिव विथ माइंडफुलनेस। हर चीज के रेस में भाग रहे हैं, खाना जल्दी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जॉब कर रहे हैं या घर पर भी हैं, तो एक फैड या फैशन आई कैन से कि अगर हम पिज्जा, बर्गर और जैसे फ्रेंच फ्राइज, कोक नहीं पी रहे हैं तो हम थोड़े डूड टाइप नहीं है। अगर हमें डूड टाइप बनना है, मॉडर्न बनना है, फ्रेंड सर्कल में जेल करना है, तो हमें ऐसे खाना खाना है। घर का खाना खाना इज नॉट गुड। और जब ही एक अपब्रिंगिंग में भी बहुत सारी चीजें आ गई है, इट्स नॉट फेमिनिटी कि हम अपनी बेटियों को कुछ नहीं सिखाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उन्हें एटलीस्ट कुकिंग तो सिखानी चाहिए। जब यही लड़कियां बाहर जाती है हॉस्टल में या अपने फ्लैट्स में रहती हैं, जॉब करते हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू कुक। स्विगी, जोमैटो इज देयर लाइफलाइन। वो खाना खाते हैं बट वी डोंट नो कि हम क्या खा रहे हैं। हमें हेल्दी खाने, होम कुक्ड फूड की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी, हम ऑफिस से आए, थक गए, लेट गए, कुछ चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा मंगाकर खा लिया, लेट कर टीवी देखा, रात के 2-3 बजे सो गए, सुबह में उठे, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चले गए। हमने अपनी बॉडी को ऐसा कर लिया है। जब ऐसे डिस्टर्ब बॉडी में, ऐसे मतलब बोलते नहीं है बैड पुअर स्टेट बॉडी में जब वो कंसीव करते हैं, तो बेचारे उस सीड की क्या गलती है? हमारा बॉडी ही नहीं प्रिपेयर है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एंड मतलब लाइफ बहुत ही अच्छी है, ऐसा इट्स नथिंग बैड, यू मस्ट एंजॉय योर लाइफ, बट देयर शुड बी सम बैलेंस। यू मस्ट ईट हेल्दी। जो भी है कमर्शियलाइजेशन है, एवरीबडी इज प्रोमोटिंग कि वी आर सेलिंग यू जोमैटो, स्विगी, जितने सारे, पर नथिंग कैन बीट होम कुक्ड फूड। जो सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, होल ग्रेन्स है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कुछ भी इसके सामने नहीं है। कोई भी मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट। यू डोंट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन डी, विटामिन सी, दिस एंड दैट। जो भी सीजनल मिलता है, लोकल मिलता है, घर का खाना है, खाओ, आप स्वस्थ रहोगे। और जब स्वस्थ शरीर में कंसीव करोगे तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। थैंक यू दिव्या जी। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. Ms. Divya, you had mentioned that while preparing for pregnancy, there is a state of mind which you should be happy always. Is there a what is called a happiness hormone in us? Yes, of course we have happiness hormones, endorphin. When we like we are doing some activity, somebody is coming and touching, hugging us with love and care, we feel happy. So if we are talking about like we have achieved something, we feel happy. Again, happy hormones releases. So there are dopamine, oxytocin, serotonin, these are happy hormones. जब हम खुश होते हैं या कोई achievement होता है, this is very common thing. When you achieve something, achievement doesn't mean that a big things in life. Small task, if you are able to complete that task in your life, you feel happy. Happiness is very important, not for pregnant women, for everybody to live life happily. And it's our mind. हमें ये समझना है कि हमें चाहिए क्या. We just run behind everything mindlessly. We don't know what we want to achieve. We are waiting for some big accomplishment to feel happy. But many a times you never reach. Before the time you reach there, you find that कि अरे पहले तो I was planning कि I will buy a Wagon R car, but now time has gone. Now I want a Mercedes. खुशी कहाँ मिलेगी? The day you will buy Wagon R and your neighbor is having Mercedes, आप फिर से सोचने लगोगे मेरे पास भी Mercedes होता, next time I will buy Mercedes. तो जो आपकी सोच है वो खत्म हो जाएगी. You need to feel happy. और ये state of mind है.
Nobody can give you happiness. It's your state of mind, what you are looking for. छोटी छोटी चीजें में आपने किसी की हेल्प कर दी. Happiness is not getting something, is giving something. आपने किसी को दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को थैंक यू बोला, आप खुश रहोगे. तो इट्स लाइक माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिविंग इन प्रेजेंट. अभी क्या है, वी थिंक अबाउट पास्ट, वी ओवर थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, बट वी डोंट लिव इन प्रेजेंट. वेरी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगी. आई वेंट फॉर अ लाइव कंसर्ट लास्ट वीक. लाइव कंसर्ट. I was sitting on the back seat, and almost in front of me, 100 cameras were recording the live concert. Just imagine. They were not watching the live concert. They were recording to see that live concert in future. ये हमारी जनरेशन और हमारी थॉट हो चुकी है. We don't live in present. और ये हमें बहुत स्ट्रेस देती है. जो यंग वुमन, जो प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें एज पर प्रेगनेंसी, तो हमें कहीं खुशी ही नहीं मिलती है. हम सब चीज भागते रहते हैं. आई डोंट नो फॉर व्हाट. थम करके वी डोंट लाइक टू एंजॉय आवर लाइफ. और जब ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी में नहीं आते, स्ट्रेस, तो फिर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है और सब कुछ चेंज हो जाता है. स्ट्रेस से नींद नहीं आती है, या तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, या तो भूख ही नहीं लगती है. हमें हमारा दिल नहीं करता है. देन वी गो इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज सारे हो जाते हैं. एंड एवरीथिंग इज लाइक साइकिल. एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट. Yeah, you spoke of this instant generation, of course, and happiness. A good hug, a good thank you would, of course, create happiness. But in this particular instant generation, it is either Zomato or Swiggy or Netflix or Amazon that really gives them happiness. But this happiness is not true happiness. But speaking of happiness, are there any foods that can increase these hormones of happiness? Like specific food mentioning, like I'm a different kind of person, and my thinking और जो मैं बताती हूँ, that is, if आप एक particular, let's suppose आप विटामिन डी अपने बॉडी में बढ़ा रहे हो, या कोई चीज अगर फूड की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर चीज डाल रहे हो, और आई एम गिविंग यू सम सॉल्यूशन कि आप ये खाओ, it will enhance your happy hormones. But everything, हमारा जो पूरा complete body system है, complete body system, organ system, everything is interrelated. एक चीज पर आप ज्यादा ध्यान दोगे, दूसरा चीज मिस हो जाएगा, फिर वो वहां पे प्रॉब्लम शुरू करेगा. You just need, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है. बोलेंगे बीट रूट खाओ, स्ट्रॉबेरीज खाओ, बेरीज खाओ, पल्सेस खाओ, लेग्यूम्स खाओ. what end of the day you need healthy and balanced diet. अगर हर कुछ बैलेंस में होगा, not only food, your lifestyle, खाना हमने हेल्दी खाया, रात के 2 बजे नेटफ्लिक्स देखते समय मैं अगर बेरीज खा रही हूँ, तो is it going to help me? ये डिफरेंस समझना है. We need a healthy lifestyle. Everything will be fine. किसी एक चीज को मैं बता करके, होता यही है प्रॉब्लम मिस्टर शंकर. If you will open the Google, you will find 10 food that enhance your release of happy hormone in your body. And we copy, we read, okay, these 10 foods I'm supposed to include in my diet. It will reduce my anxiety and stress. But it's not feasible. It's not feasible कि by just having 10 food, chocolate खा लो, dark chocolate खा लो, cocoa खा लो, तो फिर it will help you. It will boost your like happiness. For how long? 5 minutes? Do you need happiness for 5 minutes or 10 minutes or half an hour? You need continuous happiness. So you need healthy, balanced, nutritious diet, colorful diet, local and seasonal food and vegetable, whole grain, pulses and millets. Then you will not have to worry about कि क्या खाया तो क्या बढ़ा, क्या खाया तो क्या घटा. ये जो एक ट्रेंड हो चुकी है कि I will provide you इतना कैलोरी खाना, इतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इतना विटामिन. जब हमें एक डाइट चार्ट मिलता है तो this is कि like somebody has helped me, मैं ऐसे खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा. But you should understand कि क्या खाना है, complete खाना है, and it's a trap. Don't be in that trap. It is generally said that there is a belief, rather, I don't know if that's myth or belief, that women who are pregnant should not eat papaya. Is it true? Papaya seeds are like, if you are eating papaya, many people, like I
ate papaya throughout my pregnancy. And first meal just after delivering my solid food I had was like urad ka dal, maa ki dal, and brinjal ka sabji, bangan ka sabji. People say, and though I had cesarean delivery, so people say you should not eat, but I had each and everything. But in balance, in moderate quantity. Like they say ki even radish is not good for a pregnant woman, especially for first trimester. But it's radish seed that is not good. And that too in huge quantity. But if you had one bite of papaya or one radish, so it's not going to do a miscarriage in your body. So you need healthy and balanced diet. Papaya seed also. Yeah, in this connection, it is said that, I don't know, this is another myth, whether it is, and you did refer to this, of course. It is said that what the mother eats is what the child gets to eat. Is it true? Yes. After 20 weeks of pregnancy, fetus develops taste bud. First thing. Like the mistake we do and we say, hamara bachcha to khata hi nahi. He or she is totally fussy eater. It's a common problem. Ye nahi khata, wo nahi khata. We don't realize when we were pregnant what we were doing. For our craving, we have give up. We feel like eating everything. But this is a wrong concept, Mr. Shankar. During pregnancy, we need to follow a disciplined life. I never craved during my pregnancy because I was following a disciplined life. If your stomach is full, your tummy is full, you will not feel like having anything. First thing. And if you are craving also for some food, so try to change the alternative. It's nothing like that. I crave for ice cream. I crave for some sweet, but I don't crave for ice cream. But like everybody, after watching so many movies, we feel कि रात को प्रीति जिंटा ने सैफ अली खान को बोला था, I need ice cream. So even I am craving for ice cream. That is wrong. You crave for sweet. So you can have laddu, homemade sweets. You can have jaggery. You can have mishri. There are lots of alternatives. But ये जो movie वाली picture की जो drama होती है वो हमारे यहाँ पे बैठी रहती है and we compare ourselves. और पूरी family obviously they are ready to do anything. तो ऐसी craving नहीं होती है. We will live a disciplined life कि morning में इतने बजे खाना है, breakfast, lunch, dinner, snack time, everything. Then you will not crave for. If you are doing physical activity, whole day you are not thinking about food. You are thinking for other. You are doing your job. You will not crave for all these ice cream, chocolate, kulfi, and everything. So and in the 20 weeks. 20 weeks, baby fetus develop the taste buds. And in the third trimester, number of taste buds, maximum number of taste bud develops in the fetus. Whatsoever mother eats during their pregnancy time, their child develop the taste bud for those food. So, but during pregnancy, we just ये नहीं खाना, ये महक रहा है, ये नहीं खाना, ऐसा कुछ होता नहीं है. It's all psychological most of the time. 90%, 10% can be genuine also, but 90% time it's our psychological issue. I am pregnant and सबको महकता है, इसीलिए मुझे भी महकता है. It's like महक रहा है. Even ladies, mother will ask, ये ठीक लग रहा है ना? So we start saying, नहीं ठीक लग रहा है. We don't eat and we make our babies like fussy eater. So, and at the same time, whatsoever you are eating, nutrients is getting absorbed in the body of the fetus. So, if you want a healthy baby, you are supposed to eat a healthy and balanced diet. Never give up for your cravings. Now, speaking of cravings, Ms. Divya, during their first trimester, quite often young girls, they take a liking or a craving for one particular type of food. For example, in my part of the country, the moment a young girl starts eating raw mangoes, we would say, yeah, there's something happening. Or imli, some strange type of food. So why do these women who are in the first trimester take to certain cravings which they didn't have probably before they were pregnant? Yeah, it happens because of the hormonal changes that started taking place in your body. You don't understand what is happening inside the body. But certain, like you feel
acidity develops in your body, you feel like something, and for stopping, like you have mentioned, mango or the imli, tamarind, these are like a kind of prebiotic. It helps to reduce the acidity. We don't know the reason, but these kind of craving, and your body, your brain, they tell that you need something that can reduce your acidity. This is the main reason, not craving, I can say, because you feel relaxed after taking. Like, otherwise you don't find any taste bud, like proper taste bud in your mouth. Initial 3 months is like lots of change happens in your body. First trimester is really a little bit not difficult, it's very confusing for a lady. So what to do, what not to do, hormonal changes are there. So sometimes you feel like I should eat, what to do, they don't understand. But after first trimester, everything gets sets in, and they don't find such kind of craving. Now, you spoke about food, how important it is during pregnancy. So what are the types of foods that women should take who are anemic? Anemic food, I have seen with my clients, like many of them are not able to digest iron tablets. Iron is very important because ki breastfeed, जब हम lactation के period में breastfeed doesn't have iron. तो जो हम iron intake pregnancy के time में खाते हैं, body में फीटस के और जो बेबी है हमारो, उसके बॉडी में वो स्टोर्ड होता है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द 6 मंथ, जो एक टाइम होता है कंप्लीट लैक्टेशन जिसको बोलते हैं, कि उस टाइम में बेबी शुड नॉट बी गिवन एनी एक्स्ट्रा फूड, एडिशनल फूड और वाटर, उस समय स्टोर रहता है. अब ये आयरन का है, अगर हम एक हेल्दी खाना शुरू करें, जैसे spinach or any dark green leafy vegetable, pulses, legumes, beetroot, mint chutney. Chutney must, like you have mentioned that the mango and tamarind, these are like they crave for. तो थोड़ा सा एसिडिटी इनहैंस जो हो जाता है, ऑब्वियसली चेंजेस के कारण हमारे बॉडी में एक लाइफ है जो कि ब्रीथ कर रही है, हमारा जो स्टमक दब जाता है, जब जैसे जैसे फीटस का ग्रोथ होता है वैसे वैसे स्टमक होता है, अंदर की तरफ प्रेशर पड़ता है, तो एसिडिटी बढ़ती चली जाती है. तो उस समय चटनी इज वेरी मस्ट. तो उसमें जैसे मिंट, कोरिएंडर लीफ, थोड़ा सा अगर रॉ मैंगो है या फिर आंवला, गूसबेरी, ये सारे डाल करके अगर आपने चटनी बनाया, या मोरिंगा लीफ इज अगेन वेरी गुड. मोरिंगा लीफ के जैसे वी फील कि ये बहुत ही गंदा है, बट दिस इज वेरी गुड फॉर कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी. इट्स अ वेरी गुड सोर्स, एंटीऑक्सीडेंट. अगर मोरिंगा लीफ अवेलेबल हो जाते इजिली, उसको अगर हम साग फॉर्म में, जैसे सब्जी के फॉर्म में बना लिया लाइट, वो खाया, या उसको वी कैन रोस्ट एंड मेक द पाउडर and can have. तो these things will help. और अगर आप ये सारे खाना शुरू कर दिए तो आपको एडिशनल आयरन टैबलेट की जरूरत नहीं होगा. प्रेगनेंसी में ऐसे ही लेडीज कैन नॉट पुट सो मच ऑफ प्रेशर while passing there or clearing their bowel, तो constipation की प्रॉब्लम हो जाती है. and with iron tablets generally they complain of constipation. तो इस तरह के फूड और जो थोड़े से नट्स एंड सीड्स होते हैं, वो जैसे डेट इज वेरी गुड. डेट इज वेरी गुड, लेकिन अगेन मार्केट में जो सस्ते वाले डेट्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ शुगर, एडिशनल शुगर. तो वी शुड बाय गुड क्वालिटी डेट्स. इफ वी विल टेक 2 to 3 डेट्स एवरी डे, प्रेग्नेंट लेडी, देन इट्स लाइक iron requirement, 60% iron requirements they will fill. Is there any particular role that probiotics play in the management of pregnancy? Yeah, very important, because I have told कि the साइज जैसे जैसे प्रेगनेंसी में बढ़ते जाता है स्टमक का, इट पुट प्रेशर ऑन योर स्टमक, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ऑब्वियसली, और बेबी जो है आफ्टर सर्टेन टाइम जो है, बेबी के भी जो बोलते हैं कि जो उसके जो स्टूल पास करते हैं या डर्टीज होते हैं, वो सारे निकलते हैं. हार्मोनल चेंजेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं बॉडी में, तो काफी डिस्टर्ब हो जाता है हमारा. दे फील कि प्रेशर नहीं डाल पाते, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और उस कॉन्स्टिपेशन के उसमें उनका जो गुड बैक्टीरिया, quantity of good bacteria get reduced a lot. So prebiotic plays a very important role. उसके लिए बाहर से कोई additional prebiotic is not required. अगर आप fermented food at least twice a week खाना शुरू करें, and curd in your diet, everyday diet, so that will fulfill your requirement of prebiotic
as well your calcium also. So ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल फूड चाहिए, लेकिन अगर आप कर्ड को ही like 300 gram milk or 500 gram milk in form of plain curd like in raita or lassi, छाछ, any form, whatsoever your taste bud. ऐसा नहीं कि pregnancy में all of a sudden your taste bud gets changed. Many people like meetha, many people like salty. So according to your taste, if you will add curd in your life, in your daily food habits, so that will suffice your prebiotic requirement. Now, during pregnancy, quite often we see the development of diabetes, what they call gestational diabetes. Now, why does this happen, and what is the dietary change that you recommend for such women? Yeah, firstly, I will mention why it happens. It happens because of less physical activity, which a lady also feels. Like obviously changes are there. They don't prepare their body in advance before conceiving. So their body, their mind and body is not ready for that kind of change. I have seen Kareena Kapoor and Saif Ali Khan, one video on Instagram. In that, Kareena Kapoor was doing sirsashan in her 7th month. So, and nothing has happened. So nothing will happen also. You are supposed to do physical activity because gestational diabetes generally happens because of insulin resistance, and you need to enhance your insulin sensitivity. And what is the way of increasing the insulin sensitivity? Doing physical activity and eating a healthy and balanced diet. Just I have mentioned, don't give up for your cravings. So we crave, we eat ice creams, sweets at night. We don't do any physical activity. We don't believe in doing yoga or any exercise because we feel we are pregnant. We are not supposed to do any physical activity. Whole day I'm supposed to lie down, watch TV and have food. They don't sleep on time. Some discomfort is there on your back. But there are postures. If you will do certain asanas and yogas, it will relieve your back. It will give you a strength. If you will do certain asanas and exercise, it will increase your pelvic strength. It will prepare you for delivery. So it will reduce your pain, physical activity. If you will start doing physical activity, eating balanced diet, you will not develop the gestational diabetes. This gestational diabetes concept was not there before 20 years. It was there, but very percentage was very minimal. But now it has increased. Almost 7 ladies out of 10 pregnant women, they have gestational diabetes because of inactivity. They don't do any physical activity. So for first thing, it can be prevented, gestational diabetes. Second thing, then also if you have developed the gestational diabetes, you are supposed to cut your carbohydrate intake. But carbohydrate is very important for energy. So how to cut carbohydrate intake? You should reduce simple carbohydrate from your life. Simple carbohydrate means sugar. Okay. Plain the vegetables that grows inside the soil, like potato and all. You should, and rice, obviously, but you can have brown rice. Okay. And we should mind for low GI food, glycemic index food. Like a banana, that is ripe banana. If it's complete yellow, its glycemic index is 65. But if that yellow banana has 100 black spots, then its glycemic index will go up to 90. So you should take, if a pregnant lady, because complete nutrition, balanced nutrition is required, you need banana, then have yellow banana, complete yellow banana. So you should mind the low glycemic index food. You can have fruit also, but you should mind the quantity. You should never leave your carbohydrate completely. Otherwise, your pregnancy will be very difficult. You will feel complete drained out. Thank you, Divya. I think we run out of time, but very, very valuable sessions for this particular younger generation. Thank you so much, Shankarji. Thank you. And Divya has always said that, motherhood is one of the best periods of life that a woman can undergo, which men are denied. But that's a wonderful 10 months or 9 months that you have. And that, as you say, that you should live through it completely with full joy and happiness for, the child also to come out. And
in conclusion, it is normally said that God could not be there anywhere, so they created mothers. So that's how motherhood is. Thank you very much for your wonderful Thank you so much, advice. Mr. Shankar, for having me. Thank you. We now have Healthnama, a popular health capsule in Hindi put together by my co-host Kishore Malviya. The topic this time is elimination of TB by 2025, current status and the way forward. Over to Healthnama. नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की। सरकार ने देश में टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लिए वर्ष 2025 का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा है। इसके कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कोविड-19। कोविड महामारी ने सरकार के इस मिशन को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा जागरूकता की कमी भी एक वजह है। आज हम टीबी विशेषज्ञों से बात करेंगे इस बीमारी के विभिन्न पहलुओं पर, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज हम कुछ टीबी सर्वाइवर से भी बात करेंगे जो हमारे साथ अपना अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि टीबी से पीड़ित होने के बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से क्या क्या झेलना पड़ा। WHO की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड के कारण टीबी केसेस की रिपोर्टिंग में बहुत गिरावट आई है। इंडिया में 41% गिरावट आई है। तो आपको क्या लगता है कि इस गिरावट के बाद हम फिर से संभल पाएंगे, फिर से आगे बढ़ पाएंगे और ये जो टारगेट है हमारा 2025 का, इसको पूरा कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोविड के समय में डेफिनेटली रिपोर्टिंग में गिरावट आई। काफी सारे पेशेंट्स हम तक पहुंचे नहीं, काफी सारे पेशेंट्स वहीं पे रहे, कुछ को सीरियस प्रॉब्लम्स हुए तो भी हमारे तक नहीं पहुंचे। लेकिन कोविड के बाद पिछले अगर मैं 8 महीने की बात करूं तो हमारे केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस, जैसे मैं सूरत से हूं और साउथ गुजरात का पूरा नोडल सेंटर है मेरे पास टीबी का, तो 8 महीने में हमने कम बैक कर लिया। मैं ये देख रही हूँ कि जो हमारे केसेस में डाउनफॉल हुआ था, लाइक 50-60% जितना डाउनफॉल हो गया था रिपोर्टिंग का, वो वापस हमने इस ईयर में अचीव कर लिया है। और काफी सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि जो 6 महीना 8 महीने घर में थे और सीरियस होके भी आ रहे हैं। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन तो हमने वापस पहले जैसा अचीव कर लिया, बट ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि 2025 तक ये टारगेट अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज देयर आर 2 रीजंस। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जो डाइटरी हैबिट्स है वो भी खराब हो गई हैं। और साथ साथ में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस की मैं बात करूंगी कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है या मिडिल क्लास है जिसको भी टीबी होता है, तो कई बार वो न्यूट्रिशन के साथ साथ वो इन्फेक्शन कंट्रोल पे भी ध्यान नहीं देते, यानी कि उसका हाउस होल्ड कंडीशंस कैसी हैं, घर में कितने लोग रह रहे हैं, घर में उसने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। इनफैक्ट कोविड से एक मास्क का जो कहते हैं प्रचार बहुत अच्छा हुआ, बट मुझे लगता है टीबी एलिमिनेशन के लिए भी इस मास्क के प्रचार को या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के अलग अलग प्रचार को हमें और बढ़ावा देना चाहिए। तो 2 चीज है, एलिमिनेशन सिर्फ हमें टीबी को डायग्नोसिस करके ट्रीट करना है, वो तो बात सही है, लेकिन उसके प्रिवेंशन के लिए हमें न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो MDR XDR टीबी है उनको तो हमें आइसोलेट करके ही रखना चाहिए। हमारा जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसमें कि 2025 तक इरेडिकेशन की बात है, उसमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात की गई है, जो हमें तो दिख नहीं रहा है कहीं। डोर टू डोर स्क्रीनिंग नहीं होती है। नोटिफिकेशन जरूर जो है प्राइवेट वालों से कराए जाते हैं, उनको गवर्नमेंट फॉलो अप करती है। उन पेशेंट्स को उनका CB नेट लगवाया जाता है, उनको जानने के लिए वो जो रेजिस्टेंट है कि नहीं है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है कि रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है। तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग तो बिल्कुल नहीं हो पा रही और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना भी मुश्किल होता है। ये बस से बलगम जहाँ से पकड़ लेना, कितनों का आप एक्सरे करोगे। आइडियली तो एक स्पेशलिस्ट ही डायग्नोस कर पाता है ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि आपके बलगम में कई बार नहीं आएगा, बलगम अंडर रिपोर्टेड रहेगा। कितनी लैब सेटअप हैं,
कि आप बलगम उतने टेस्ट कर पाओ, उतने पेशेंट्स को ले करके एक पॉइंट पे कितने लोग मिलेंगे आपको उस दिन, बलगम आएगा नहीं आएगा सुबह में, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, डायग्नोसिस में। तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग कितनी ज़्यादा पॉसिबल है, वायबल है, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर संदीप, ये बताइए कि क्यों ये री इन्फेक्शन क्यों होता है? इंडिया में जो है मालनरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, अंडर नरिश्ड माल नरिश्ड लोग हैं, डाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो यंग पेशेंट जैसे ये लोग हैं, कई बार ये लोग अपनी पतले रहने के लिए जो डाइट करते हैं, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन लोड कम हो जाता है। न्यूट्रिशन कम होने से कीटाणु आपको अफेक्ट करता है और आपको फिर बीमारी होने का खतरा रहता है। वैसे तो हम लोग क्लिनिक में बैठते हैं, हम लोग बीमारी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में जब हम लोग शुरू करते हैं अपना इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई, हमेशा बताया जाता है कि अच्छा ब्रेकफास्ट करके निकलें, कुछ और करें ना करें, सुबह एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेके निकलें। क्या चूंकि आपको जब टीबी हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, तब आप दिल्ली में पढ़ते थे और उसके बाद आप बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो क्या दिल्ली मुंबई में भी आपको इस तरह का सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ा था? सोशल स्टिग्मा तब फेस करूंगा जब मैं बताऊंगा कि मुझे टीबी है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुरू में ही बोल दिया था कि ब्रोंकोनिमोनिया बताइएगा जब भी जहां भी पूछेंगे। सो मैंने ब्रोंकोनिमोनिया बताया, तो किसी को कभी शक भी नहीं आया कि टीबी था। इवेंचुअली देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई यूज्ड टू बिलीव कि मुझे ब्रोंकोनिमोनिया है, मुझे टीबी नहीं है। इतने बार मैंने वो झूठ बोल दिया था। सो सोशल स्टिग्मा नहीं आया था, बट आई रिमेम्बर, क्योंकि मुझे तो ये सोशल स्टिग्मा के डर से ही आपको झूठ बोलना पड़ा? बिल्कुल। मुझे तभी समझा नहीं कि मुझे झूठ क्यों बोलना है, बिकॉज टीबी ऐसा कोई मेरे फॉल्ट की वजह से तो नहीं हुआ था, ना ही मुझे ऐसा कोई बीमारी था जो कि अगर मैं ट्रीट नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे को फैलेगा या दूसरा लोग डरना चाहिए। बट बिकॉज डॉक्टर्स एट द बेस्ट हॉस्पिटल्स, आई टोल्ड यू, अपोलो, हिंदुजा, लीलावती, नाउ आई कांट नेम एनी बेटर हॉस्पिटल्स देन दीज। अगर वो डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं कि मत बताओ, अगर बताना नहीं चाहते तो अब मुझे आई वाज एट लॉस ऑफ वर्ड्स और मैंने नहीं बताया। सोशल स्टिग्मा मे बी इन द फॉर्म ऑफ कि अगर मुझे कोई खांसी होता था और कोई जोक करता था, या या नाउ अब मुझे कुछ बोलना होता तो नाउ आई एम वोकल, बिकॉज काफी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग को टीबी होता है और इट्स इफ ट्रीटेड इट्स अ नॉर्मल डिजीज। आप एक टीबी सर्वाइवर रही हैं, पहले तो ये बताइए कि किस तरह का टीबी हुआ था और क्या इम्पैक्ट रहा इसका? सर मुझे एक्चुअली टीबी इंटेस्टाइन में हुआ था, एंड मुझे 2 बार हुआ था इनफैक्ट, 2007 और फिर 2013 में। एंड पहली बार जो था वो ड्रग सेंसिटिव टीबी था, बट आई थिंक तभी भी वो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था मेरा। मैं ऑलमोस्ट 15 मंथ्स तक मैंने मेडिसिन लिए थे टीबी के लिए। एंड मतलब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी, तो मेरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों लाइक ऑलमोस्ट मेडिकेशंस में चले गए थे तभी, बट कैसे करके मैंने मैनेज कर लिया। और फिर मैं आगे पढ़ने के लिए फिर मैं दिल्ली गई थी और मैंने रेडियो और टेलीविजन जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी। फिर 2013 में मेरा फिर से उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा कि मेरा री इन्फेक्शन हुआ है, एंड आई थिंक तब मेरी कंडीशन बहुत ही बदतर से बदतर हो गई थी। एंड डॉक्टर्स ने कहा था, जिन्होंने मेरी पहली बार डायग्नोसिस की थी, उन्होंने ही मुझसे कहा कि हम पहले आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगर मेडिसिन काम नहीं आते हैं तो फिर हमें तुम्हारी सर्जरी करनी होगी और वो इंटेस्टाइन पोर्शन को रिमूव करना होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। आई थिंक इसको बताते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोलोन टीबी आई थिंक, या इंटेस्टाइनल कॉक्स, ये नाम हमें बताया था। इंटेस्टाइनल कॉक्स और टीबी इन द कोलोन, सो दिस वाज व्हाट वी वर टोल्ड। एंड फिर एक सर्जरी के नाम जो स्टार्ट हुआ था, इट एंडेड अप विद 6 सर्जरीज आफ्टर दैट। तो आज के हेल्थनामा में इतना ही। हेल्थनामा चैनल हमारा यूट्यूब पर है और आप इसे सब्सक्राइब करिए और सारे एपिसोड एक साथ देखिए। नमस्कार।
Namaskar and welcome. We now have the session intro video. Welcome back. The next 1 hour will be on cervical cancer prevention, diagnosis, causes, symptoms, vaccination, and management. Cervical cancer in India ranks as the second most frequent cancer among women between 15 and 44 years of age. To discuss more on this, we have with us the eminent Dr. Hema Diwakar, one of India's leading gynecologists and practices at Diwakar Specialty Hospital in Bengaluru. She was the head of the Federation of Obstetrics and Gynecological Society of India, or FOGSI. She's also a technical expert with Institute of Public Health, a Government of India initiative. She was president of the Karnataka Societies of Obstetrics and Gynecology in 2010 and president of BSOG in 2000. Welcome, Dr. Hema Diwakar. Wonderful having you with us as always. And Namaskar. Thank you. I hope you didn't have any problem during the Bengaluru floods. Swimming our way through. Yes, that is what life is all about, that we have to swim through everything. Thank you. And we are joining her would be Dr. Nisha Bhatnagar, a senior gynecologist and medical director at Aveya Fertility and IVF Center, New Delhi. Later on joining would be Dr. Chavi Gupta, who's working as a consultant infectious diseases at Fortis Hospital, Noida. And last but not the least, we have Dr. Shubhi Yadav. He's a consultant gynecologist at Dharamshila Narayana Super Specialty Hospital, again in New Delhi. So for the first round of questions, I hand over this platform to my co-host, Kishore Malviya. थैंक यू सर. मेरा पहला सवाल डॉक्टर हेमा दिवाकर से है. जी. डॉक्टर हेमा, देसी वैक्सीन आ गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए. ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन वैक्सीन तो दुनिया में पहले से मौजूद है. ये नया वैक्सीन
जो इंडिजिनस है वो कैसे अलग होगा, कितना इफेक्टिव होगा, कितने होप है आपको इससे? होप या उम्मीद तो हमेशा हमको बनाए रखना चाहिए, नो मैटर व्हाट। वो तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ। और ये वैक्सीन जो है, आप अभी मुद्दा लेके चले हैं HPV वैक्सीन, यानी कि ये वैक्सीन लिए तो सर्वाइकल कैंसर और कई सालों में जैसे पोलियो एलिमिनेट हो गया था, वैसे पोलियो वायरस जैसे HPV वायरस भी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी एलिमिनेट हो जाएगा। वो हमारी सोच है। तो ये वैक्सीन जो है कई सालों से साइंटिफिक एविडेंस के साथ साथ मौजूद है, लेकिन उसके कॉस्ट अधिक रहने से जितने लोगों को उसके फायदा होना चाहिए था, महिलाओं को, खास करके युवतियों को, वो नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये वैक्सीन अब तक नहीं जारी किया हुआ है। अभी जो इंडिजिनस वैक्सीन आप कह रहे हैं, उसका तो क्वालिटी पे हमें कोई शक नहीं है। 4 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPV वायरसेस है, उनके अगेंस्ट ये तो काम करेगा और सर्वाइकल कैंसर की प्रमाण बहुत बहुत घट जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी लिटरेचर सपोर्ट है, साइंटिफिक एविडेंस है, उसमें कोई शक नहीं है। यदि दाम भी कम हो गया, फिर भी इसका महत्व कितना है, ये कितना जरूरी है कि हर बच्चे को 14 या 15 साल, जब ये एडोलेसेंट एज में इसको दे देना चाहिए। जब तक वो गवर्नमेंट प्रोग्राम में नहीं आएगा, जब तक वो एक वैक्सीनेशन का तरीका नहीं बन जाएगा, जब तक हर युवती, हर महिला जो एलिजिबल है उन तक वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, वहीं पर हम गैप आज के दिन में देख रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके प्रोग्राम के द्वारा लोगों को ये पता चलेगा कि ये वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम, 3 डोसेस लिए तो सर्वाइकल कैंसर का ये 100% कॉज है, तो 100% ये निकलने की उम्मीद रहेगी। डॉक्टर हेमा, WHO ने रिकमेंड किया है, जो उनका रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन जो है शुरू में 9 to 13 या 9 to 14 एज ग्रुप को दिया जाएगा जी। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा कम है, इस रेंज ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एडोलेसेंट को कम से कम तो देना ही चाहिए? नहीं, ये जो पूरे HPV का जो जिस तरीके से वो कैंसर एक महिला के बदन में आती है, सर्विक्स के, मतलब बच्चेदानी के गले, जो नेक ऑफ द यूट्रस जो बोलते हैं सर्विक्स के, उसका तरीका ही बिल्कुल अलग है। और WHO का हमेशा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक हेल्थ स्पेस में जब भी देखते हैं, तभी 9 to 15 इज द आइडियल एज। ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है कि 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल उनको भी सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए ये HPV ये वायरस उनके बदन में जा सकती है और उनको भी वैक्सीन देना जरूरी है। लेकिन ये मास वैक्सीनेशन अगर 9 to 13 एज ग्रुप में आप डिफाइन करके, मानो अगले 20 सालों में सभी 9 to 13 पे आप वैक्सीन दे दिए, तो WHO का सोच है और पब्लिक हेल्थ का सोच है कि पूरा देश से ये एलिमिनेट हो जाएगा। उस तरीके से अगर सोचे तो 9 to 13 इज द एज ग्रुप, बट लाइसेंसिंग जो है ये वैक्सीन की, वो आगे के उम्र में भी है। तो प्राइवेट में या 1-on-1 जो इसके बारे में समझ पाते हैं, क्योंकि 15 years, 18 years, 20 years, 22 years में भी आप दे तो फायदा उतना ही है उनका। लेकिन पूरे आप गिनती करने लगे तो 9 to 13 आप स्लैब करें और सभी लोगों को पक्का आप जुड़ा के दे दे, एक कैंपेन मोड में सबके दिमाग में ये जाए कि 9 to 13 है। तो और अडल्ट वैक्सीनेशन के सिवाय ना, चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन जो है वो माइंडसेट पे भी इट्स ऑन अ प्रॉपर ट्रैक। ठीक है, तो ऑल 9 to 13 इन द कंट्री आर कवर्ड। उस दिन जब आएगा तभी आप बोल सकते हैं कि हीलिंग हो गया, HPV निकल गया। दैट इज द फाउंडेशन, जो हील फाउंडेशन का जो आप है, तो दैट इज द फाउंडेशन फॉर हीलिंग। तो उस हिसाब से WHO रिकमेंडेशन दे रहा है, दैट इज इन द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। बट वैसे साइंटिफिकली देखें तो कम उम्र के सभी लोगों को ये तो जरूर देना चाहिए।
थैंक यू डॉक्टर हेमा, आप हमारे साथ बने रहिए। सेकंड राउंड में फिर हम लौटेंगे जी। मिस्टर शंकर बात करेंगे फिर सेकंड राउंड में। डॉक्टर छवि गुप्ता। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के 1.3% मरीज हैं दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में 2.5, लगभग डबल है। कोई खास वजह, क्यों वल्नरेबल है इंडियन वुमेन? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सर्वाइकल कैंसर के यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो वो भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सिर्फ कॉज है, उसके अलावा अनदर कॉजेस भी हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एथनिसिटी होती है। आप जो कह रहे हैं कि दुनिया में इंडिया में पर से हम कहें कि इस ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की जो आंकड़े हैं वो विश्व भर से बहुत ज्यादा है, उसका सबसे पहला कारण ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, बट ये जो ह्यूमन पैपिलोमा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, ये कोई नई वैक्सीन नहीं है, ये बहुत पुरानी वैक्सीन है। और आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में काफी हद तक ये मैंडेट है कि यंग फीमेल्स को ये वैक्सीन लगनी चाहिए। इंडिया में हमारा वैक्सीन रेट जो है ये अभी भी बहुत कम है, इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है मैं कहूंगी, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इंसेंटिव है या प्रोग्राम है। और इवन अगर ये सर्वाइक जो एक नई वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि इंडिया में इसकी समझ बहुत कम है। इसके अलावा अनदर फैक्टर्स भी होते हैं वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के, जो इस रेशो को बढ़ाने में मदद हमारे इंडिया का जो वो है आंकड़ा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे एथनिसिटी हो गई और आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गई, तो ये भी कारण हो सकते हैं अदर कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन में होने के। डॉक्टर छवि, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है किसी पेशेंट को कि उन्हें? आप शायद ये टॉपिक जो एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो आपको वैक्सीन के बारे में बता पाऊंगी फिलहाल, तो वो दे विल बी द बेटर पर्सन। आप वैक्सीन के बारे में ये बात बताइए कि इस वैक्सीन के क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, इस वैक्सीन के कोई भी ऐसे मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर हम इस वैक्सीन की हिस्ट्री देखें तो जब ये वैक्सीन लॉन्च हुई थी, इसके बाद कुछ सालों बाद इस वैक्सीन को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था, हॉल्ट कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन आप लेटेस्ट जितनी भी स्टडीज देखेंगे, इवन एक स्टडी 14,000 फीमेल्स पे हुई है जिसमें ये पता चलता है कि इस वैक्सीन के कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू डॉक्टर छवि, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर निशा भटनागर, सर्वाइकल कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, किस तरह के, और कौन सा इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हील फाउंडेशन फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मैं अपने सवाल का जवाब 1 मिनट में देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो 2 सवाल आपने पहले पूछे कि WHO ने 9 to 14 एज ग्रुप क्यों क्लासिफाई किया है। मेरे हिसाब से जो सर्वाइकल कैंसर का मेजर रीजन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, वो स्प्रेड होता है आपका सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के साथ। और जैसे जैसे आजकल अब अगर हम देखें ऑल ओवर वर्ल्ड, प्यूबर्टी का जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, मिनार्की का बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। प्लस दूसरी बात है कि सेक्सुअल एक्टिविटी एंड सेक्सुअल एक्सपोजर धीरे धीरे यंगर एज से स्टार्ट होता चला जा रहा है। तो वैक्सीन का मेजर काम होता है प्रिवेंशन। अगर हम ये कह रहे हैं कि 13 या 14 साल की उम्र से आजकल सेक्सुअल एक्सपोजर बढ़ रहा है बच्चों में, एक दूसरे से, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की भी बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज हम ये कहें कि ये बढ़ता जा रहा है, यंगर एज पे लोग एक दूसरे को एक्सपोज हो रहे हैं, तो प्रिवेंशन उससे पहले होने चाहिए। ठीक है, तो वैक्सीन उससे पहले लगना चाहिए। इसलिए ये कारण है कि WHO ने 9 से 14 इयर्स का एज ग्रुप सेलेक्ट किया है इस वैक्सीन को देने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा सिम्टम्स। जो यूजुअली सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो सर्वाइकल कैंसर हमारे गायनेकोलॉजी में कहा जाता है कि इट इज द बेस्ट कैंसर टू हैव। क्यों?
क्योंकि इसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत 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 स्लो है, इसका जो डिटेक्शन है वो बहुत बहुत इजी है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत 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 इजी है। तो सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत की जो स्टेज है, प्री कैंसर स्टेज जो है, वो बहुत पहले से ही डायग्नोज की जा सकती है। जो फीमेल्स है उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका जो 2 मेंसेस के बीच में आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद आपको अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट सिम्टम्स इट एक्सप्रेसेस इट वेरी वेल, अपने उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है, अगर आपको सर्विक्स ब्लीड करता है टच करने पे, या आपको बीच बीच में पीरियड के अलावा मेंसेस ब्लीडिंग हो रही है, या आपको इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इमीडिएटली जाकर के अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। दूसरी चीज है इसका डिटेक्शन, जो कि बहुत इजी है। आप एक सिंपल पैप्समियर का टेस्ट या लिक्विड साइटोलॉजी का टेस्ट करवा सकते हैं, और आपको पता चल जाता है कि सर्वाइकल कैंसर के सेल्स आपके सर्विक्स में मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। और ये जो मेरा सवाल था कि कौन सा कॉमन है इंडिया में, किस टाइप का कैंसर सबसे ज्यादा सर्वाइकल? यूजुअली मैं एक्चुअली इनफर्टिलिटी से डील ज्यादा करती हूँ, तो हमारे पास तो ज्यादातर पेशेंट्स जो अर्ली स्टेजेस के आते हैं, और अर्ली स्टेजेस में हमारा डिटेक्शन यूजुअली सिंपल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया या यही सेल्स हमें मिलते हैं, जिसका हम तभी से ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट कर देते हैं विद द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एंड ऑल। किशोर जी, शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि HPV कौन से टाइप के इंडिया में जास्ती मौजूद है, वो पूछना चाह रहे हैं निशा जी। तो 16, 18, 33 वो नंबर्स वो पूछना चाह रहे हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट HPV 16 एंड 18 रहता है, और इंडिया में भी यही कॉमन है जिससे कैंसर कॉजिंग होता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो बहुत सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के सीरो टाइप्स होते हैं, उसमें से 16 और 18 कॉमन के साथ साथ 16 और 18 मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मतलब वो एक क्षमता रखता है कि एक वो प्री कैंसर स्टेज को कैंसर स्टेज में कन्वर्ट कर पाए। जो कि कॉमन सीरो टाइप्स हैं वो है 6 और 11, जो कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये बिनाइन टाइप्स होते हैं। तो जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन होती है वो 6, 11, 16, 18 को मेनली टारगेट करती है। तो जो भी वैक्सीन प्रिवेंशन होगी वो 16 और 18 को ही टारगेट करनी चाहिए, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी है, कैंसर में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर निशा भट्टागर, आपने अर्ली स्टेज की बात की, तो कितने स्टेजेस होते हैं इसमें? Usually it is only inflammatory smear, then pre-cancerous stage, then early stage, just when you detect few cells, squamous metaplasia is there, and then fully fledged cancer development is there. Then it is stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, that is FIGO classification. उसके लिए हम जो है स्टेजिंग करते हैं, सेल्स लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें लैप्रोस्कोपी करके उसका स्प्रेड देखना पड़ता है, हमें MRI करवाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि लिम्फ नोड्स कितनी इन्वॉल्व हैं, क्या वो फैल गया है लिम्फ नोड्स के जरिए। उसके हिसाब से हम फिर स्टेजिंग डिसाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। यूजुअली क्योंकि अर्ली डिटेक्शन है, फुल फ्लैश्ड स्टेज 4 के केसेस हमें बहुत कम देखने मिलते हैं। दूसरा, एक जो आपने एक और सवाल पूछा था कि इंडिया में क्यों ज्यादा 2.5% इंसिडेंस है। मेरा मानना ये है कि इंडिया में अभी भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिकली रूरल पॉपुलेशन में, फॉर डूइंग पैप स्मीयर, सिंपल टेस्ट। एक सिर्फ आपको ब्रश से स्मीयर लेकर के चेक करना है। तो भी मैंने रूरल मेडिकल कॉलेज गोंदिया में 1 साल काम किया था। आप यकीन मानिए, सिर्फ रूरल एरिया में ही हमें फुल फ्लेज्ड कैंसर स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लेडीज वहां जाती ही नहीं है, वो चेक कराती ही नहीं है, ब्लीडिंग होती रहती है, वो लोकल कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, वो एक सिंपल सा सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट भी नहीं कराते पैप स्मीयर। सो लेट स्टेजेस हमें ज्यादातर रूरल केसेस में, रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। थैंक यू निशा जी, आप बने रहिए, दोबारा लौटेंगे हम आपके पास। डॉक्टर शुभी यादव, नमस्कार। नमस्कार। ये सर्वाइकल कैंसर में रिकवरी के चांसेस कितने रहते हैं, या हर केस जानलेवा होता है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलती हूँ हील फाउंडेशन को, और उससे पहले आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ। यहाँ पे आपने बार बार एक क्वेश्चन उठाया, टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर।
सो अगर हम सर्वाइकल कैंसर के टाइप्स की बात करें ना, तो इंडिया में या बाहर भी देयर आर 2 मेन टाइप्स जिनको हम डील करते हैं. एक हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और दूसरा एडिनोकार्सिनोमा. नाउ देयर आर अदर वेरिएंट्स आल्सो ऑफ कैंसर. सो हम सारी चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकते. हमारे को ये देखना होता है कि कौन से टाइप का कैंसर है. नॉर्मली स्क्वेमस सेल कैंसर्स या एडिनोकार्सिनोमा अगर हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाता है तो उनकी रिकवरी वास्तव में बहुत अच्छी होती है. Suppose if the patient at stage 1, they have very good response and recovery chances. Even in the patients with stage 2 या stage 3 में भी आते हैं, उसमें surgery possible नहीं होती है उन stages में, but in those stages also 60 to 70% of the patients really do well. They have a very good life and problem free life. ऐसा नहीं है कि उन patients को आगे कोई दिक्कत आती है. So अगर आप stages की बात कर रहे थे सर, अभी हमने देखा अगर stage 1 जैसा कि अभी बात हो रही थी, अर्ली स्टेज में अगर हमारा कैंसर डिटेक्ट हो जाता है सपोज स्टेज 1 में, तो हम पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं. 15 से 20 दिन में हमारा मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है. उसके बाद में हमें पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रखना होता है, ये देखने के लिए कि बीमारी वापस तो नहीं आ रही, क्योंकि हम सब समझते हैं कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी वापस आ सकता है. बट अगर स्टेज 2 और स्टेज 3 में पेशेंट हमारे पास आता है तो इन पेशेंट्स को हम सर्जरी नहीं ऑफर कर सकते हैं. इन पेशेंट्स को नॉर्मली हम रेडिएशन देते हैं और हल्की कीमोथेरेपी देते हैं. But response is almost equally good for these patients also. WHO has given a survival rate of 93% if it is detected in stage 1, and stage 4 survival rate is 15%. So early detection is very, very important. तो जैसा कि डॉक्टर शुभी यादव, जैसा कि डॉक्टर निशा ने अभी थोड़ी देर पहले गोदिया का जिक्र किया था, तो अर्ली डिटेक्शन तो रूरल एरिया में बहुत मुश्किल है, वो जाते ही नहीं है टेस्ट कराने, और बहुत जगह टेस्ट की सुविधाएं नहीं है. तो क्या इस बीमारी को लेकर जागरूकता की ज्यादा जरूरत है इस समय, कि लोगों को समय रहते पता चले, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? डॉक्टर शुभी यादव. अगर आपने क्वेश्चन पहले भी उठाया, एंड ये क्वेश्चन सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को जानने के लिए, बिकॉज कम्युनिटी में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी ना, वी कैन नॉट प्रिवेंट इट. अगर हम इस कैंसर की बात करें, पहले भी ये बात उठी है अभी, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट कैंसर टू हैव, क्योंकि इस कैंसर को प्री कैंसर से कैंसर तक डेवलप होने में ऑलमोस्ट 10 to 20 ईयर्स लग जाते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर हमारे यहाँ वुमेन्स दे टेंड टू हाइड देयर प्रॉब्लम्स, वो छुपाती हैं. इसके सिम्टम्स बहुत पहले से आने लगते हैं, जैसे कि अभी बात उठी, पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, गंदा पानी जा रहा है, यौन संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है. नॉर्मली महिलाएं इस बात को छुपाती हैं, उन्हें इस बात की जागरूकता ही नहीं है कि आगे चल के ये बीमारी बढ़ सकती है. तो हमें उस बैरियर को कहीं ना कहीं तो हटाना पड़ेगा. और वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर हम देखें तो दे हैव मोर ओपन अप्रोच, दे आर मोर अवेयर. तो अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे नहीं तो आई थिंक सो दैट विल बी लिटिल टफ. तो अगर हमें रूरल एरिया तक जाना है, हमें लोगों को बताना है, हमें जानना है कि अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो डॉक्टर के पास सही समय पर आए तो इसका इलाज हो सकता है. इसकी ना 2 चीज़ें हैं, वन इज अवेयरनेस, वो नहीं है, और दूसरा होता है डर. तो हमें दोनों चीज़ों को निकालना है लोगों के मन से कि बीमारी ठीक हो सकती है सही समय पे अगर पता लग जाए. गाँव में तो पीरियड में भी लोग बात करना जरूरी नहीं समझते हैं, शर्माते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं. इवन गांव की बात नहीं करूंगी मैं सर, इवन शहरों में भी अगर आप देखें तो लोग अपनी बातों को छुपाते हैं. इतनी जल्दी से कोई भी फीमेल अपनी हर प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करती रहती है. अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा, अभी हुआ था. क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट ही हूँ, जो भी पेशेंट्स या फीमेल्स मेरे पास ओपीडी में आती हैं, मैं जब उनसे ये पूछती हूँ इतने लंबे टाइम से चल रहा था, बताया क्यों नहीं, उनके यही जवाब होते हैं, घर में ये दिक्कत थी, फिर ये हो गया, ऐसे हुआ. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती हैं और शर्माती. डॉक्टर शुभी, मैं इनफर्टिलिटी से डील करती हूँ, सो मुझे मेरे हिसाब से आई माइट बी रॉन्ग, बट इग्नोरेंस के साथ साथ एक वो फियर ऑफ ये रहता है कि मतलब ये जो है ये कुछ किसी तरीके का श्राप है. मतलब अगर सपोज कुछ हो रहा है मेरे साथ, अगर मैं अच्छी हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे को प्रोटेक्ट करेगा. और अगर कुछ कैंसर है, ये श्राप है, आपका कुछ गलत मेरे मतलब, इसीलिए भी वो लोग छुपाते हैं, इसीलिए भी वो लोग. मैंने यही बोला कि डर एक बहुत बड़ी चीज है लोगों के मन में, इसीलिए जागरूकता की बहुत जरूरत है. बहुत यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम अपने स्कूल से ही, अपनी जो स्कूल से जब हमारे एक बिहेवियर की और हमारे उसकी डेवलपमेंट होती है, अगर तभी से हम फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल एंड इन विषय में पढ़ाई कराएं, शिक्षा दें,
तो शायद हम आगे 10-20 साल बाद कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कामयाब रहें, क्योंकि शुरुआत से ही सिखाने पे ही मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ये बिलीफ है कि लोगों के अंदर ये डर निकलेगा और उनमें अवेयरनेस आएगी, और वो बच्चे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं या फीमेल लड़कियां हैं अपने घरों में भी जाके अपने मम्मियों से और अपने और फैमिली मेंबर से जब ये बात डिस्कस करेंगी तो ये एक अवेयरनेस का एक तरीका हो सकता है। And I think Australia is a very big example. अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अभी कैंसर मुक्त हो गया है, सर्वाइकल कैंसर, जस्ट बिकॉज ऑफ HPV स्क्रीनिंग उन्होंने किया, उन्होंने मास स्क्रीनिंग किया, सो देयर इज नो कैंसर। एंड सेकेंडली वैक्सीन की डॉक्टर छवि जैसे आपने बात उठाई, अभी स्टडीज आ रही हैं कि एटलीस्ट 8 डोज इज आल्सो इक्विवेलेंट रिजल्ट्स इट्स शोइंग। अभी हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें जो 9 वैलेंट वैक्सीन है, जो बताया गया है कि 15 ईयर से कम में अगर वो लगाई जाए तो वो हाईली इफेक्टिव है और सिंगल डोज भी कामयाब है। तो अगर 15 साल की उम्र से पहले ही देखिए, अगर आप अगर हम मान लें कि अगर आज हम इस सर्वाइकल वैक्सीन को अपने नेशनल प्रोग्राम में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो भी नेशनल प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करने का मतलब मैंडेटरी नहीं है। हमारी कंट्री में कोई भी वैक्सीन मैंडेटरी जबरदस्ती नहीं लगाई जाती, ये वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी देने के लिए भी आपको फीमेल्स को पहले उनके माता पिता को अवेयर करना होगा, उनको समझाना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग इस वैक्सीन को लगवाने के लिए तैयार होंगे, चाहे इसकी कितनी मर्जी कॉस्ट हो, चाहे वो 200 में लगे। यही चीज आप देखेंगे कोविड टाइम में भी हुआ था। शुरू में लोगों में वैक्सीन नहीं लगवाने की वो थी, इसको वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं। तो उस हेजिटेंसी को दूर करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, तभी एक बंदा 10 लोगों को समझाएगा, इसी तरीके से कंट्री में अवेयरनेस फैलेगी। तो जो यूरोपियन कंट्री में मैंडेटरी प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, उसके माध्यम से एक ये अवेयरनेस क्रिएट करने का भी तरीका हो सकता है। किशोर जी, मैं इस राउंड के अंत में 2 चीजें मैं सामने रखना चाहती हूँ अपने दर्शकों के सामने। एक जो है ये सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए सिर्फ हमारे पास 2 तरीके हैं। वन इज प्रिवेंशन, अनदर इज अर्ली डिटेक्शन। जितने अर्ली आप डिटेक्ट करोगे उतने पूरे संपूर्ण तरीके से उसको ट्रीट करके उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे अच्छे रहे, ऐसे देख सकते हैं। आज तक मतलब 10 साल 15 साल पहले तक हमारे पास सिर्फ अर्ली डिटेक्शन का ही एक हथियार था, जो पैप्समियर या HPV टेस्टिंग जो हम बोलते हैं, टेस्ट करके देखे कि इसको अर्ली कैंसर स्टेजेस में तो ये महिला है या नहीं। तो उसके लिए कोई सिम्टम्स होना जरूरी नहीं है, उसके पूरे रिप्रोडक्टिव एज में हर 3 साल में कम से कम एक बार उसको बिना सिम्टम्स के भी प्रिवेंटिव केयर के लिए वो जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्ट हो जाने से उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज के दिन में वो तो एक तरीका है ही, लेकिन प्रिवेंशन ये आने से पहले ही हम रोक सकते हैं। द साइंटिफिक फैंटास्टिक ब्रेक थ्रू है जो HPV वैक्सीन के जरिए हमारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए जैसे कि बाकी के विशेषज्ञ भी बोले हैं, जल्द से जल्द हम उसको लगा देना चाहिए। लेकिन जब हम उनके माँ को समझाएंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले तुम लगाओ, तो उनके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग उनके मुद्दे उठते हैं। तो उसके और इसके मिक्स करने से पहले, और भी अब स्टडीज के बाद जो छवि जी ने की, तो उसके और भी स्टडीज हो रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द मतलब 3 साल या 5 साल में भी जैसा हमको एक तरीका मिल जाए तो कवरेज इसके बहुत गहरी तरह से हो सकता है। तो द बेस्ट टाइम इज 9 to 13। उसके मतलब ये नहीं है कि वो मिस कर लिए आपने तो बाद में लगाने से भी इसका फायदा है, वो हम सब दर्शकों को बताना चाहते हैं। क्योंकि आज आपके प्रोग्राम को 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के महिला भी देख रहे होंगे, तो उनको भी अपने डॉक्टर से जाके पता करना चाहिए कि मेरा HPV टेस्टिंग कर लीजिए, और टेस्टिंग के बिना भी वो वैक्सीन भी लगा सकते हैं। कई तरीके के वैक्सीन है, 4 वैलेंट है, 9 वैलेंट है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन दोनों पे हम एक कैंपेन मोड पे सभी लोगों को समझा के छोड़े, तो उनको क्लैरिटी आएगी कि कोविड वैक्सीन जैसे आया, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारे पास, जिससे हम HPV वायरस को दुनिया से हटा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर हेमा, एंड थैंक यू डॉक्टर शुभी। हम दोबारा लौटेंगे आप लोगों के पास। अब मैं हैंड ओवर करूंगा शंकर सर को, लेकिन उससे पहले
एक क्वेश्चन शंकर सर से है. According to highly placed sources, today is your birthday. Is it correct? I will not deny it. Thank you and Happy birthday to you. happy birthday, sir. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. birthday, Thank sir. you very much. I don't Now know over who to- your highly placed source was, but the source was right. Over to Well, you, sir. thank you very much. Thank you for your wishes. And my question would be for all four of you doctors. One is, if a young girl, say 13 to 14 or 16, would come to your clinic for some other test, some other ailment, would you recommend a pap smear or a mandatory pap smear? Starting with you, Dr. Dwakar. I would definitely recommend a vaccine. Yes. So, what about pap smear then? Smear is Pap actually smear is- recommended after the initiation of the sexual activities. There is the invasive process. And secondly, the guidelines recommend pap smear हम करते हैं 25 साल के बाद में हम शुरू करते हैं करना और 65 years तक करते हैं और किसी भी महिला को whosoever comes to my OPD मैं सबको ये बोलती हूँ एटलीस्ट इस पीरियड में आप अपने 2 pap smear जरूर करें. So, you would recommend a vaccination first? Of course, जब तक For young girls. Young girls, yeah, young girls. इवन फॉर ओल्डर आजकल की स्टडीज में अप टू 45 इयर्स तक क्लिनिकल डिसीजन पे वैक्सीन लगा सकते हैं. तो जो भी महिला ओपीडी में आती है हम उनको उस तरीके से काउंसिल कर सकते हैं. Fine. I'll start a question with Dr. Hema Devakar. Dr. Hema, Yeah. September was a landmark, apart from my birthday, of course, for India, because the nation got its first cervical cancer vaccine, quadrivalent human papillovirus vaccine, or QHPV. Can you explain more about this vaccine and how would you compare this vaccine with the other vaccines that are already available or were already administered earlier? Okay. The breakthrough that a cancer can have a vaccine against it was in itself a big breakthrough. So first it came monovalent vaccine. That means against one cancer-causing HPV virus, yes, we have the weapon to attack it. Then came bivalent, that is 16 and 18. So that was the next stage of evolution of the vaccine. Then they said 4 common types. In a whole family of HPV viruses, all the cousins put together, some are quiet, some are benign. They will not cause any harm to anybody. But some are very aggressively invading and malignant. Those are those numbers that we are referring to during the course of this talk. So 16-18 was the bivalent vaccine. Then it came quadrivalent. That means against 4 different notorious numbers, we can attack it. So this has stayed for the longest time with all the studies done, etc. But we also recognize there is a small gap here because there are another 3-4 types of viruses which may not only be responsible for cervical cancer, but they're also responsible for warts. They're also responsible for anal cancers. They're also responsible for oropharyngeal cancers, but they belong to the HPV family. So the 9-valent, that is the new kid on the block, the latest one says that if you attack these 9 HPV viruses, these particular numbers by giving this 1 dose or 2 doses or 3 doses, whatever, the 9-valent is the latest development which covers a whole umbrella. But we must not let the best come in the way of the good. That's what we always believe. And if the costs of 9-valent are going to be huge, and just to cover a small little extra bit, we say we can't afford it, so we can't even do anything for you. That's a clear no-no. 4 has stood the test of time. The new one, which is Make in India, or which is going to be available, we hope, at a very reasonable cost, so that cost doesn't become a issue or cost doesn't become a barrier for implementing this vaccination program, then that quality is good enough as any other quadrivalent vaccine available in the world, because those 4 will anyhow be attacked, and more than about, a large number of cervical cancer, virus causing viruses will be anyway under the control of the, fighter cells developed due to this vaccination. Yeah, during the launch of this particular vaccine, it was said that the QHP vaccine or Sorovac
has demonstrated robust antibody response that is nearly 1,000 times higher than the baseline against all targeted HPV vaccines, the 4 ones that you said, and in all doses and age groups. What's your comment on this? No, I think we should, we have already lagged behind in making use of the 4-valent, because even in the affordable population, the campaign was not strong enough, both from the suppliers and the healthcare seekers. So we have already lost out on sufficient time needlessly, with many women coming to Shubi in an advanced stage rather than getting the vaccine earlier in their life. So the robustness of this vaccine, we should not doubt, and that should not cause any hesitancy just because the cost is low. Sometimes the attitude may be that, at such a low cost, how it can be available, it may not be good enough. That is not the case. We would campaign and battle for as many as our girls and women to take this at the earliest point that it is available. Of course, the same problems which we grapple with the supply chain to the last mile and the implementation, that's going to be there. So we should be prepared to work our way around it and get the jab in there as early as possible. Well, this is supplementary to what you just said now. And during the launch, again, it was said that it is said that the vaccine is very effective and prevents cervical cancer because in 85 to 90% of cases, cervical cancer falls under the HPV targeted types, the 4 types that you said. That's so right. If we give it to our young children and daughters, this is the statement issued by the government, that we give to our young children and daughters, they are protected from infection and consequently, probably 30 years later, cancer does not occur. Are you concur with this view? Yes. Oh, who did you ask? Chavi. I asked you. Yes. Yeah, Chavi. Yeah, please. मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट जो लॉन्च कर रहा है, ये इन कोलैबोरेशन विद बिल्स एंड गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन है, जो कि एक वैक्सीन को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल दूसरी वैक्सीन के टेक्नोलॉजी के बराबर है. इस वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस लाइक पार्टिकल जिसका हम यूज करते हैं वो किया गया है. जैसा कि डॉक्टर हेमा मैम ने बताया कि मोस्ट कॉमन वेलेंट्स जो हमारे सर्वाइकल कैंसर में कॉज करते हैं, जो कि बहुत ही हाईली मैलिग्नेंट है, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन बन जाए. आज तक अब पिछले 2-3 साल के भीतर ही 9-वेलेंट वैक्सीन आई है जो कि अच्छी बताई गई है. उससे पहले हमेशा से क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन ही मार्केट में अवेलेबल थी और वो हाईली इफेक्टिव थी. स्टडीज में more than 95% efficacy थी if given before 15 years of age. तो कोई भी हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए हमें मोस्ट कॉमन टाइप को टारगेट करना होता है, ना कि बेस्ट टाइप को, क्योंकि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बेस्ट टाइप को टारगेट कर पाए. तो उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप को उन्होंने टारगेट किया और इस वैक्सीन का प्रोडक्शन किया और फेज 1 and 3 ट्रायल में ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिवली पाई गई है. 95% से ज्यादा एफिकेसी है. दैट इज वाई इनको अब लाइसेंस मिला है कि ये आगे फर्दर प्रोडक्शन करके मास स्केल पे वैक्सीन को कंट्री में लॉन्च कर पाए. टेक्नोलॉजी इज सेम एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल वैक्सीन जो अवेलेबल है. Yes. Dr. Hema, have they announced the pricing of this? Because I only saw the launch of it. The expected range is rupees 200 to 400. That's what we get to hear. But as I said, the mass numbers which will be required, the quantity which will be required, and to supply to the last mile, that we will really have to fast track working our way around it. And I think this is again the second opportunity that God has given us to do good for the girls and women of our country, which we must not fail. Yeah. Dr. Chavi, I'll come to you. When should this vaccination against HPV be administered in the first place? As we have already discussed, जो हमारा इंटरनेशनल, देखिए हमारे पास इस विषय में इंडियन डेटा अभी तक नहीं है. अभी तक जो भी डेटा है वो इंटरनेशनल डेटा है, जो कि WHO और CDC और एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होता है ऑन इम्यूनाइजेशन, उनकी गाइडलाइंस है. तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जो कि एक 15 इयर्स को माना गया है, उससे पहले ये वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड है, इट शुड बी गिवन. उसके बाद आप देखेंगे 15 to 26 तक इट must be given, and after 26 to between 45 it is given on shared clinical
डिसीजन। तो ये 3 टर्म्स जो है वो यूज की गई हैं। अब मैं आपको इस 3 टर्म्स का मतलब बताना चाहूंगी। ये माना जाता है कि बिफोर ये जो वैक्सीन है ये एचपीवी के न्यू वायरस को प्रिवेंट करती है, लेकिन एक बार ये एचपीवी का अगर कोई सीरोटाइप ऑलरेडी बॉडी में इस्टेब्लिश हो जाए तो उसमें ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। इसलिए बिफोर 15 इयर्स एज की बिफोर 15 इयर्स को इसलिए रखा गया है शुड बी क्राइटेरिया में, बिकॉज ये माना जाता है कि इस टाइम पे ही फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी अगर स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। दैट इज वाई इसको 15 इयर्स 9 to 15 इयर्स के बीच में शुड बी गिवन एंड कंपल्सरी इन जो भी यूरोपियन कंट्रीज में जहां पे मैंडेट है वहां पे कंपल्सरी दिया गया है लेस देन 15 में। अब आगे की उम्र की बात करते हैं। 15 से 26 साल तक भी इसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी बताई गई है, मोर देन 90%। इसलिए कुछ कुछ जगहों पे अप टू 26 इयर्स तक भी इसको रिकमेंड किया गया है। और अब पहले जो हमारा वैक्सीन का डेटा था उसमें मोर देन 26 पे इसको रिकमेंड नहीं किया जा रहा था, लेकिन अगर हम अब आगे के डेटा की और लिटरेचर की बात करें तो अप टू 45 इयर्स तक एक स्टडी हुई है जिसमें बहुत सारी फीमेल्स को इंक्लूड किया गया है। और जो मीन ज्योमेट्रिक टाइटर हम देखते हैं वैक्सीन की किसी भी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए अप टू 45 इयर्स तक काफी अच्छे रिजल्ट्स बताए गए हैं। ऑल्दो इट इज नॉट एज गुड एज अगर हम देखें 15 इयर्स में अगर देखें तो अगर 97% की एफिकेसी आ रही है तो अप टू 45 इयर्स तक भी 86% की या 87% की एफिकेसी है। तो ऐसे में WHO या CDC की गाइडलाइंस में 26 और 45 इयर्स को शेयर्ड क्लिनिकल डिसीजन बेसिस पे छोड़ा गया है। शेयर्ड क्लिनिकल डिसीजन बेसिस का मतलब होता है कि जैसे कोई महिला आपके पास आई, आपने उससे डिस्कस किया तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन और महिला की मर्जी के अनुसार वो वैक्सीन को रिकमेंड किया जा सकता है। तो ये इसके एक अलग अलग एज क्राइटेरिया है जो कि गाइडलाइंस ने डिफाइन किए हैं। और अब बात करें हम अपने इंडिया की, जहां पे सर्वावैक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इनिशियली इनको एज अ मैंडेट प्रोग्राम, एज अ स्कूल प्रोग्राम जो हम कहें कैंपेन चलाएगी वो 14 इयर्स पे होगा। लेकिन बात करें अगर 14 इयर्स के ऊपर की लड़कियां या उससे ऊपर की महिलाएं अप टू 45 इयर्स तक लगवाना चाहें तो प्राइवेट मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। और जहां तक मैं कहूंगी कि कॉस्ट तो एक इशू है ही इस वैक्सीन हेजिडेंसी के लिए, बट सबसे बड़ा जो इशू है वो है इग्नोरेंस। नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर, जो और भी अडल्ट वैक्सीन होती हैं जैसे न्यूमोकोकल हो गई, उसके लिए भी हमारी कंट्री में कोई अवेयरनेस नहीं है। वैक्सीन हेजिडेंसी उस विषय में भी रहती है जो कि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि हाईली रिकमेंडेड वैक्सीन है अडल्ट एज ग्रुप में। तो इट इज नॉट कि कॉस्ट इज द ओनली इशू, अवेयरनेस एंड वैक्सीन हेजिडेंसी आर द मेन इश्यूज जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का रेट बहुत कम है, कवरेज बहुत कम है। Now you said that in US and Australia and other places it's mandatory that girls below 50 in few of the European countries, European countries it's mandatory. So what's the policy in India? Is it mandatory to give vaccines to this? इंडिया में कोई भी वैक्सीन किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी, इवन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी कोई भी वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। वैक्सीन्स आर ऑलवेज वॉलंटरी इन इंडिया, आवर कंट्री। So then in that case, how will you overcome this problem of hesitancy? By awareness, by educating people. हमारी जैसे डॉक्टर शुभी ने बताया कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप इस वैक्सीन के बारे में बात करना चाहें तो लोगों को शायद शुरू में समझ ही ना आए, बट जैसा कि आपका ये हील फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी एनजीओज हैं जो इस विषय में काम कर रही हैं। अगर हम स्कूल्स में जाके लोगों को अवेयर करें, कॉलेज की लड़कियों को अवेयर करें, तो मैं समझती हूँ कि कुछ सालों बाद शायद हमारी वैक्सीन हेजिडेंसी कम हो जाए और हमारा इम्यूनाइजेशन रेट कुछ बढ़ने लगे। Fine, I'll come back to you. I'll go to Dr. Nisha Bhatnagar now. If a girl is already infected with HPV, will vaccine prevent that strain of HPV from causing cancer? So this already discussed. The thing is that how does a vaccine work? A vaccine works by giving that exposure to that virus and the body prepares the immunity against it. So as soon as the actual virus attacks, our immunity destroys it. So if it is already, the strain is already present in the body, the vaccine is not going to be effective against it. That's why the whole idea of preventing it by giving it before the sexual activity starts.
Now, will it protect against new infections other than the strains of HPV included in the vaccine? Yes, it can. But the thing is that the most common, we have again discussed it again and again, that the most common ones which are causing are the ones which are the malignant ones, are the ones which we are developing vaccines against. So if the female is already exposed to this and already has that infection, the vaccine is not going to be effective. Other strains it can prevent, but the other strains may or may not be the serious ones, may not be the ones which are causing damage. Now, I just want to remind the panelists also that some of the questions may look repetitive, but this is because those questions were in Hindi and this is particularly in English. So this is particularly for the English audience. So my next question to you: do men also get HPV? Yes, they do. How do they get it? Again, by sexual activity only. And Why? it is more common in gays and all also because the anal intercourse, oropharyngeal intercourse, this all increases their chances of having it. Now, this question I would like to ask to all the gynecologists, of course. That we now see increasing sexual activity at a very early stage. The so-called experimental sex that is happening, and it is common in school children, 10th standard, 11th standard. Will this be a cause for, say, an increase in cervical cancer? Yes. The answer is, of course, yes. That's why WHO is giving prevention from 9 to 14 years of age. So I think there is a lot of, in India specifically, I don't know about the Western world, but India slowly mimics the Western world. So if we talk about it, I think in Western world, they are now again, to some extent, coming back to preserving their virginity for the, my one, the chosen one, or things like that. But India, the male and females were way too restricted. They were kept way too separately. So now is the time when they are exposed to each other. The parents are opening up. The colleges, hostels are like, the hotels and all. There is more frequent commuting. All of them have phone. The availability that they can talk to each other easily. They can make plans easily. So now they are in exploration phase. They are exploring each other. And the rates, I will tell you, I have seen a very high increase in incidence of unmarried girls taking unwanted 72 and MTP pills from the chemist. Then they come to us with irregular bleeding and all. Because they are not, still India, it is opening its avenues to free sex, but it has not opened its avenues to educating the people about right sex. That is the problem. They are getting information from whatever sources available. I will tell you, parents still don't talk about menstruation. They are hushed about. They are not. There is a small change. I have teenager daughters. Now they are, because starting me, they were very hesitant about talking about their menstruation cycles in front of their father. But then we encouraged it. It's normal. It's nothing. It's normal, physiological. You should be celebrating that you have achieved womanhood. Now they tell their father to, bring pad for me or whisper packet for me. So now this is what we should be doing. We should be encouraging our children. We should be educating them. This is nothing taboo about. You should talk about it freely. That is the thing what India needs at this moment. What's your take, Dr. Hema? Yes, you earlier also spoke about this experimental sex problems. So, yeah. No, I wanted to just make it very, very clear to our audience. As Chavi said, 9 to 15 before sexual exposure, yes, that's a good bracket. But if they've had sex even any number of times before, or if they have had HPV infection any number of times before, the other age group brackets that we are talking about, 15 to 25, 25 to 45, still the vaccine is to be given and it's very valid. That is one point. That is the catch-up vaccine that they have to take. So let's not move away with the impression that if the early exposure to sex, then, she's lost the opportunity for vaccination. No, she has to be counseled accordingly. And I feel that every single women's healthcare provider in their space, now there is a wonderful opportunity, because we always ask about COVID vaccine, have you taken or not? Very immediately, by default, we ask about the HPV vaccine also. It should have come to our mind and pen much earlier than the COVID, but at least now there is a track that is laid out. So when we raise that topic, then there is some discussion.
But we would also want media houses and the general awareness to raise, so that the patient herself also sometimes proactively asks. So we are in the middle of a mad mess, and then she asks a question. It's a good start point for us to discuss and give her the vaccine proactively. So I think that in very rapidly with the digital platforms helping to raise the awareness, and the social media saying, I have been vaccinated, have you? Things like that will create a buzz, and it will be more implementable than ever before. And as I said, I emphasize once again that those who are already indulging in sexual activity or already had the HPV infection are also eligible for the vaccination. That message should be very clear. राइट यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर हेमा ने बताया कि जो ऑलरेडी हैड been exposed to sexual activity must get vaccine. The concept or the logic behind is that with every sexual exposure there is a chance of acquiring HPV virus serotype. That is why उन लोग जो WHO and CDC has given a recommendation up to 45 years, considering that the female has a healthy reproductive sexual activity till 45 years of age. That is why it has been recommended that with every sexual exposure, there is always a chance of acquiring HPV vaccine. So there is never late. Even if someone has missed the vaccine in his early age or her early age, they can get it at later on stage to prevent. Prevention देखिए कहाँ पे कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता कि किस स्टेज पे कौन सा HPV वैक्सीन वायरस ट्रांसमिट हुआ है कौन सा नहीं. और जहां तक आपने जो डिस्कशन पॉइंट एक रेस किया है अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, यस बिल्कुल सही बात है. हमारे पास बहुत सारे HIV के केसेस भी आते हैं आजकल की कम्युनिटी में, होमोसेक्सुअल्स एंड ये बहुत कॉमन हो गया है इवन इन इंडिया. तो हर प्लेटफॉर्म पे हर व्यक्ति को अवेयर करने की बहुत जरूरत है. और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये वैक्सीन सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल्स के लिए भी है. होमोसेक्सुअल और गे कम्युनिटी में इस वैक्सीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड HPV का जो ट्रांसमिशन है बहुत हाई है. अगर फीमेल में ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है तो मेल में HPV वायरस जो है आपका एनल कैंसर कॉज करता है. तो इवन वेस्टर्न वर्ल्ड इज नाउ स्विचिंग फ्रॉम फीमेल वैक्सीनेशन टू मेल वैक्सीनेशन ऑल्सो. तो आज के टाइम पे मैं आप फीमेल वैक्सीनेशन के साथ मेल वैक्सीनेशन के अवेयरनेस की भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस है जितनी फीमेल वैक्सीनेशन की. That's a very important point that you raised, because there is a general conception that it is only a female vaccine. No, males के लिए भी ये recommended है, considering आज का जो lifestyle है और हमारी जो tendency है वेस्टर्न कल्चर को imbibe करने की, क्योंकि बहुत से हमारे पास मरीज आते हैं जो कि एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस वगैरह के लिए आते हैं, मैं बताना चाहूंगी. तो दे मैक्सिमम बिलोंग टू द होमोसेक्सुअल कम्युनिटी आल्सो. सो उनको भी अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है. Shankar, there is a word of caution though, in countries like ours, when we say gender neutral vaccine, okay, say that both girls and boys are eligible for that. We haven't been able to bridge the gender gap even in terms of food and education, which is preferentially given to the boys in the family. So this should not, in preference be given to. We have to put it on par that yes, every child, whether it's a boy or a girl, is eligible and can be given. So if they can invest only on one, then they should not give a preference to the boy. So that is where, the leadership of even from our organization is thinking about how to promote the gender neutral vaccine in the Indian scenario, where there is so much gender discrimination happening on very routine things. So we need to add that caution also that in the next 2 years, perhaps, if you massively cover all the females and then move on to the next step of covering the entire population of boys and girls, that will be a wonderful thing to do. So instead of rather spreading the meal across, have it a very concentrated thing so that you cover female first, so that you have a slight this one towards the female, because that is where the danger lies. Well, your take, Dr. Shubhi, I know you've been waiting and hearing all the speakers. Shubhi, yeah. See, what I've been hearing right now is since long. Yeah. We should go for vaccination beyond 25, 26 years. We can give up to 45 years. I just like to add on over here, vaccine can always prevent the disease. We should not forget into this
that we have to advocate routine screening for our patients. So vaccine is not a supplement for routine screening. So whether your patient is sexually active, she's more than 25, you can give her vaccination. But even though if she's vaccinated, she has to undergo routine screening. That is with pap smear every 3 years, or if she's getting an HPV test done every 5 yearly. So that has to be advocated. Like, it's not so that you got the vaccine, so you won't have any disease. So that notion should not go. People should know, even if you have vaccinated, you have to undergo routine screening. So I think I just wanted to add that over here. No, but I would like to have your take on this experimental sex that's happening in societies, especially in large metros. So what's your take on this? Because Delhi is also opening up very fast, like Bengaluru and other places, and you see younger girls going for experimental sex. So is this a danger across? And if so, how do you overcome it? I think already there has been a discussion about it, and very nicely put up by Dr. Hema and Dr. Nisha onto this. Sex education is something I think that's still a taboo in India. We don't talk about, we don't advocate. I think that should begin from a household. Our mothers should teach us to their children how to manage this thing on. So I think a proper education should be given to our younger ones and young adolescents so that this is being practiced. So they should know where things go wrong, how they can be prevented. Even for that matter, like most of the males, if you come across barrier methods, they even don't want to use it. So that should be actually properly advocated. And I think for this, creating this awareness, we cannot only rely on the government. I think all the public sectors and especially the NGOs will have a greater hold and take on it. Apart from like to add that safe sex practice should also be promoted, because it is not only the single thing that we are talking about, only HPV and cervical cancer vaccine. Safe sex practices should also be promoted because it will prevent many other diseases also, like HIV. Every sexually transmitted disease can be prevented by safe sex practices. So these should be promoted, and people should be, even our teens, adolescents should be educated about all these things. Even cancer is more common in patients who are having STDs. So that is one thing that that is why safe sex practices are to be promoted. Very important. This message. One important thing, Shankar, that most of our studies are showing that the youth of the country, 85% of the times they're getting all their gnan from the digital platforms and the social media. Just it's a 10-15% who seek information either from parents or teachers, or they get wrong information from the peer group, etc. So we as responsible healthcare providers and parents need to be in that space, to tell them in the way that they want and promote the youth for youth kind of an activity where they themselves get the correct information and they disseminate it to the peers. So we have to work a little differently onto this awareness campaign, which makes them to do a responsible sexual behavior. That is the key to the our culture was the one which was more open to sex and education right from the very beginning. We are the only ones who have a complete book on how to Kama Sutra, but now we are just hush about everything. We don't want to talk about it to our kids. So I think we should go back to our culture and try to inculcate right habits into the children. I think that should start right from your own home. Like your mother, your family should be more open. The young girls should be more open to talk about it. Yeah, it should be normal. It's like you are hungry, the same way your hormones make you. So you should be understanding this. That is a normal requirement. Nothing wrong with it. So Dr. Nisha, I would like to ask you a supplementary to this. We were very open. We had Kama Sutra. We had temples where we had open statues on sex and various posters and all these things. But how did this particular transformation take place from such an open society to such a hushed society that we are now battling to go back to normalcy? I think over the period of time, people tried to put restrictions and then the rules of the societies and everything. And the right thing was not conveyed. To some extent, these rituals and all I am not against about anything, but the religion make it sometimes more difficult to practice the true things. Over the period of time, it deteriorated females. We were the ones where females were worshipped. We have all the devis. But slowly, over the period of time, somehow these things which were our legacy are left behind, and we reached this platform today. I think I put it in a nutshell saying that blame it on men, because they had they had a dominant role in these rituals and other things where they pushed all the names to the back. I think
somewhere it's not the men or female. It's about the societal rules. It's about the system, the religion. I think religion is the one to be blamed on. I think so. Being a spiritual is very, very good, but being religious is sometimes putting you into boundaries. Yeah, and my point was these religious rituals are all dominated by men. I don't see any female in that. So earlier it was all female. The men could not perform the ritual without the better half. Yes. Quite true. Yes, Dr. Surabhi, you wanted to ask something? No, that's okay. I think she already answered it. Yeah. Now, one final round of questions which I would like to ask to all of you. You all emphasize, you're all very senior doctors, you all emphasized on the need for counseling or education. Now, slowly people are coming out, like in Pink when Amitabh Bachchan asked that particular girl whether you had sex before, and she had no hesitancy in saying yes. And in Bareilly Ki Barfi, somebody asked the girl, are you a virgin? And she has no hesitancy in saying no. So, that hesitancy is coming out. But what would you say is the starting point for educating young population on the need for safe sex? Dr. Hema Divakar, starting with you. No, there is no doubt that they need to be aware. But what I'm again trying to emphasize is they don't wait for you or me to go and tell them a thing or two. They're all, it's called a mismatch. They're already exposed to many of these, whether in the way of pictures or some things on the net media. Every small child is carrying a mobile, and once in a while, something or the other, they cannot relate to it, but they are, trying to work their way around what this could mean, etc. So it is a continuum, and we call it a life course approach. At every stage, some little thing has to build over, and I really have to confess that we don't have the structured methodology of doing it in a non-judgmental way. The capacity of even the providers have to be built, whether they're teachers or whether they're healthcare providers or specialists. The way of approach to this entire thing with the soft skills, it's very, very sensitive issue. And I don't think so just a moral policing or say yes or no or do this or don't. Nobody's asking us. That's the reality. So we need, the need is evident because they are getting information, but they may not be getting the correct information or they may misinterpret it. There we have to plug and, get them not only for STDs and HPV, etc., but also 15 million abortions are happening in the country. That means even the married women are not knowing a thing or two about contraception or what they need to do. So overall, the one who is providing the information, whether she is equipped with the correct information or not, is also a huge gap. So there are several things. We've been talking about education, awareness, but it has to go in a very different format in the present era and be acceptable to the generation next, and then we will reach somewhere. Yeah, briefly, Dr. Nisha, your take. I think the first point should be communicating. The moment a small child comes and asks that why she's having a different shape or what, we should not hush them down. We should try to answer it in a reasonable, understandable language. So the first time should be giving them a signal. The first thing should be giving them a signal that we are approachable. Come to us, talk to us, we will answer you. So this is the first thing which needs to change. The moment they think that we are approachable and we have a friendly, instead of shutting them down, how can you talk about this? What is this? No, if you have to be open about it. And once you answer their question, they will definitely come back with the next one to you only. Correct. Communication is extremely important in any. I would like to add one point here, that as we are discussing that there is some hesitancy among parents and children, between parents and children. But I would say that apart from your home teaching, school teaching is very much essential part. If the regular counseling or educational sessions are being conducted in the school right from the very right age, that is from the beginning of their activity, or like we can say around age of 10 to 11 years, that will surely going to make an impact, because at this time they can easily be approachable. They can be made to understand through regular counseling sessions, through regular teaching by their teachers, mentors, so that they can be educated about all these activities, their behavior activities, supported by the parents in this program. Like if a school tries to conduct such sessions, parents should not refrain from sending their children to attend these sessions. Rather, they should be encouraged
So these are some of the platforms where we can imbibe such good culture and safe practices that is going to help our future generation. Similarly, in the college going students, both females and males, I would not say only females, males are also need to be educated about all these activities and things in an appropriate manner. Quite right. Dr. Shubhi, your last word from you. It has been well summarized over here. So first thing is, an accurate information should be provided. Yeah. By the time of their age group, considering their age group, what they should know, how that accuracy is really very important. Secondly, I think we need to bring our children and our youth in such a way that they understand their values. They should have the insight regarding the sexuality and they understand it, like why it is, why it can be problematic, why it can't be, why there shouldn't be a pressure of all these things. And the social pressure and taboo should be actually taken out. So I think this providings of the great, this will provide them with, safe practices. That is all about, we talk about the safe sex education, providing to our children. Yeah, the problem with this particular generation is they already come loaded with information, but that information need not be right and they can carry it away. And the message is not appropriately conveyed to them. Right. Google prompts. The moment you type something, it gives you further sentences and then you actually scroll down. The correct message does not reach to them. So that is why providing accurate information so that they have the right attitude is really very important. That is what I think. Yeah. Thank you very much. I think it was a wonderful session. And we are in a stage where we have a weapon with us to fight against cancer, but we do not know how to release it. How to use that weapon, to prevent this in this war against cancer. Exactly. I hope we find that formula. Appropriate training is essential to use this weapon. Yes, I think the Health4All Foundation is doing a very good job to bring these topics, and it's really commendable, both of you. Thank you so much for giving us this wonderful platform to share. Happy birthday again and many more glorious years. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Kishoreji. Thank you. Yeah, over to you, Kishore, for the concluding remarks. Thank you, sir. Thank you, Dr. Hema, Dr. Nisha, Dr. Chavi, Dr. Shubhi. आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इतने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू। दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया और ये सुना, और उम्मीद है कि डॉक्टरों ने जो भी सुझाव दिए वो आप उसका पालन करेंगे। और जाने से पहले अंत में हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए एपिसोड में और नए विशेषज्ञों के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर शंकर सर को हैप्पी बर्थडे टू यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू। और हमें इजाजत दीजिए ताकि शंकर सर से हम पार्टी ले सकें। थैंक यू। And that will be an online party. Thank you very much. Thank you. Namaste. Bye.